We will see Santosh and Velavan coming in. The insides, obviously, it's going to be Vasant Murugan and Marimuthu Selvam, that guy, the one guy to watch out for, I'm sure. And we saw the Murugan factor there, but here we have the cover factor, the money content Yeah. factor for the Nilgiri Knights, both of them very strong. And lastly, in the middle, we have Surya Selvam, not to forget the substitutes, Sundara Vishwa, Ayu Malai, Kesavan, Abhikumar, and Harish. Yeah, wonderful, Ryan. The way you pronounced Yelumalai, that sounded so much Portugal. As Mohan Gowda actually flips the coin over, and Marimuthu says, I need the coin. And I will also stand on the same court where we are standing. As the first raid, of course, will happen from the man who just lost the toss. I think Arun Kumar Anjapoli will be starting the proceedings, and here we are with him. Couple of matches where he was not there. Chola Veerans struggled, Ryan. They struggled big time because 91 raid points in just 30 matches. He is the go-to man. And it is nice to see that he will be accompanied by Sujit Sagar. Sujit Sagar also suffered a minor injury, but he came into the fold as a big support to Arun Kumar Anjapoli. Today, he has to do the same thing here, Ryan. Right, both of them should come out big and it will be great to see them support each other. Speaking of one man who supports his team big time, it's Marimuthu Selvam, a century plus 2 of points for him across the 20 matches and an impressive strike rate of 46.15. I would love to see him finish with a better strike rate when it comes to finishing the rest of the season here, Naveen. Yeah, very much. And the reason why he can take a little low is because, Surya Selvam is always there. Because Marimuthu Selvam, he needs to understand that he's the captain, so he always is there on the court. But he has to also control Velavan Muruganandan today. Number 12, that left corner defender, yesterday went out to raid unnecessarily. And you look at that, 3 losses on the column. 1 loss is solely Pallavan's responsibility. I'm sorry I'm picking out one player, but it should have been him. Because the moment he got tackled out, couple of times, the next raid itself, there was a point that was being scored on the weak left corner. He's a very, very good left corner defender. Number 12 there, Velavan Muruganandan. Today, he has to just forget about his fantasies of raiding. And we're just waiting for that question. Can Nilgiri win the championship in their inaugural season? Raghav Sharma. Wow. Good question. And first of all, I will tell you, Raghav, I will just try to break this in 2 parts. First, I want to see the Nilgiri Knights finish at least in the first or second position, which they can, because that's how they finish the booster round. And when that happens, if they finish first or second, I am very sure they will go through to the finals very clearly. Because that first qualifier, if Nilgiri Knights can get in there in the first or the second position, I'm sure they will do more than 100% to win that and reach the finals directly there, Ryan, isn't it? Oh yes, the Nilgiri Knights very much capable and one of the contenders to win all this season. But we can look at the Chola Veerans so far. They've won 7 games, lost 15. It's not their ideal season, but I'm sure all it takes is a certain spark to turn things around. And they've got this couple of players coming in today in today's match to come and change their fortunes. As we look at the performance across the last 5 games, yes, we all do hope their new players their returning players can change their fortune for them, Naveen. Yeah, that's what they'll be also hoping. Or rather opening on the hope, of course, going out there. Raki Kumari, right? Where do you think the Chola Veerans is lacking in terms of gameplay? Yeah, that is solely the defense. Yeah, the raiding is okay. The defense, when Gautam Murugan actually flips over, everybody just looks very clueless. But that is the reason I think Vineet Munichami and Saran Murugan has come in to strengthen that defense. That is what Panir Selvam Raja has brought into the new fold of the team. Let's see, can Vineet Munichami repeat his performance like yesterday? We will go to the countdown and get this match number 97 underway. The toss was won by the Nilgiri Knights. The first raid will happen from the right to left of our screen as Akshay Desai has got a new haircut. And so do everybody. I think even Ryan, I just had a new haircut today.
because there was so much happening. And speaking about new haircuts, do you like Shah Rukh Khan, right? What a tough question, right? Of course, I do love Shah Rukh Khan. Oh, that is what I want. Vela wants to do. Raider out. Arun Kumar 1 point, Agrawal Nilgiri not Knights. yet warmed up after those break days. And Velavan, that is the best he can do. Left corner, comes around. Indeed, and for a second we thought Arun would escape that, but he did not seem to have a reason or a way to just turn his body and go back. As we can see, the team coach, Mr. Raja, I'm sure he's planned out a strategy, he's planned out a game plan. Can he come out strong? Can his team come out strong? We will know soon enough. Yeah. Number 11 out. He should play more tighter. Should not be playing so high line. So Ryan, yeah, in the pre-show we were discussing that see as a new raider is Vasant Murugan. He's come in and he settled down into the team very smoothly. That's how Rajaram would have wanted him to do that. That is very good. But for a defender, it's not easy. It's really not easy. Because Vineet Mulchami, again Saran Murugan, of course they are very good as defenders, no doubt about it. That's why they are here in the Yuva Kabaddi series. But coming in and settling into a already, ongoing series, that too at this level of toughness on the Yuva Kabaddi series platform, it takes a little doing. It takes more than little, I should say, for the defenders. Yeah, rightly said, Naveen. As Marimuthu Selvam, the key raider, one of the key raiders of the Nilgiri Knights, is coming in. He's the mighty knight of this team, and doesn't look like he'll get a point here because he's running short of time. He still wants to go for it all the way, but he will have to be humble there. Yeah, he should also be patient enough. And this is Sujit Sagar. After that injury that he sustained, he's come back. He's the sole left raider in today's lineup for the Chola Veerans. And he really needs to stay there as Chola has still not opened up their account. And one tackle point on Brent rate point already for the Nilgiri Knights. Good that Sujit is just testing waters and going back. And speak about testing waters, we've got Shah Rukh Khan, who's just released his Jawan teaser, and he's tested a lot of water with that. He's brought in one of the biggest directors, young directors who gave blockbuster hits. That is Atlee in Tamil. He's brought in Atlee for Jawan, and there are, there is a big gang of people from the Tamil industry going in out there with Shah Rukh Khan's production. As we will speak about that more, Ryan, as Ayappan comes in for a do-or-die raid. Oh yes, we talk about Shah Rukh Khan. Do-or-die raid came in right after 1 that, point, and that Chola is Veerans. blockbuster Jersey stuff, number ladies and 17 gentlemen, as the Chola Veerans open their point scoring with that very good point coming in from the raider. That was lightning fast. He did not expect it at all, Marimuthu. That's wonderfully done. Can you expect this here from Ayappan Veerapandiyan always? He should be really wary of such things as Vasant Murugan here, Ryan. He comes across on a do-or-die raid. No, Sujit Sagar, you shouldn't have gone 1 in point, to long your Nilgiri hands. Knights. Jersey number 13 for out. the ankle hold. Not needed as a raider, but they want to review the bonus. I guess they want to go for the bonus review, is it? No, they won't. The reason I'm speaking about the Jawan movie and all that is because you have that big star cast of Nayanthara, who's from Tamil Nadu, of course the Tamil heroine Vijay Sethupathi, big name. And more than all that, Ryan, for the first time we have seen Shah Rukh Khan in a completely shaved head look. That's a new hairstyle for the King Khan. Yeah, well, that's the beauty of someone like Shah Rukh Khan, right? He goes out of his comfort zones, or it might be in his comfort zone, but he goes out of his base to just get into that role and embrace that role, and that's why he's such a great actor. I think the naturality he has, the simplicity that's there in him, all of it just constitutes to show how good of an actor he is. Oh, just amazing and marvelous. And even at this age, got that discipline to keep up that body physique so much. And yeah, speaking about embracing, one defender likes to embrace the raiders when they are blinded a little, and that is that left corner. Velavan Muruganandan, watch this.
Wow, he embraces the raider on that strong back hold and utilizes his height to good effect. Because I've not seen any cover defender or the corner defender go for such kind of an embraced hold. It's not a back hold, it's not an ankle hold, it's an embraced hold. 1 point Nilgiri Knights. Jersey number 14 out. That we are introducing on the Yuva Kabaddi Series platform as Praveen Kumar INR does not go back in time. Oh yes, and there right now, Nilgiri Knights have done so well. And I'll tell you what, sorry, correction, right? Yeah, speaking to Harshad in the pre-show. Right, Ryan, you know what? See, this was the perfect example as we are into a do-or-die race of 10 seconds left. Under 8 seconds, Arun Kumar Rajapuli still not warmed up enough. 1 point Nilgiri The Knights. combination gets him now, right cover. And the combination of that, he gets lovely support from Mari Muthu and also Surya Selvam. Hey, I was telling you about that, isn't it? When we speak about embrace hold, that is how, even on the visuals, that has to be done. Oh, he's pushed him out. Vasant Murugan has another chance. He's pushed out another defender. Can these two go for the super tackle and inflict it? No. 1 point Nilgiri Knights. Jersey number 66 out. Yeah, so I'll tell you, when we have a lovely production person as Ashwin sitting in the PCR, what happens is the storytelling revolves after the commentators call it and the visuals are given away. When we spoke about embracing, we just saw right time it got fired. Just before Surya Selvam went into the race, we spoke about that, and also we spoke about how that raid of Surya Selvam got a running attack. That is a classical piece, which I'm really happy. It just took me to one of the amazing days in the Yuva Kabaddi Series. Wow, Vasant Murugan just pushes him off. This is getting easier and easier for the Nilgiri Knights. 1 point Nilgiri Knights. Jersey number 55 out. Yep, and the same old story for the Chola Veerans, especially when they're going up against a team like the Nilgiri Knights. You know, this is where I feel they struggle or they lack because they're not able to establish themselves early on in the game. And when you go up against a team like the Nilgiri Knights, who you've been familiarized with, you should come in with a little more intent as the first out has been inflicted. 1 plus to 3 points. Will be the Nilgiri score Knights. after the points All out get added Chola on. Veerans. And Nilgiri Knights starting strong here. Yeah, Saran Murugan. There should have been a substitute, isn't it, by Panthers Raja. All in. Saran Murugan, last man standing as a defender, goes in. You had Mohandas Vishwamohan. Yeah, P. Raja should have thought about it. Really. And Rand, the reason why we are looking at this challenger round so much with the binocular eyes is because this is going to decide the positioning and the standings of the summit round. We just had the summit round, the road to finals that was shown in the pre-show. So that is very simple. From all the seasons, we have that. We give extra credit to people finishing at top two. The teams going ahead and playing the entire series well gets that extra bit of reward. But if you're finishing on the first or second position, you get one win to go straight through to the finals on July 19th to play. But if you lose, you still have another chance and you can still have a strike at that trophy. And Sudhir Sagar, I think he's not 100% fit here, Ryan. He still, I think, has a niggle. He will be back stronger and back up to his full potential as Marimuthu Selvam, a man who's showcased his potential. He's made use of the talent in regards to, putting out and coming out best in his opportunity that's given in the Yuva Kabaddi series. And as of now, not even a single tackle point. And the question just takes me back to that question. What is the problem of the Chola Veerans? Why are they not able to perform better? It's because of this. As I rightly mentioned it out, it's their defense. The defense has been a big problem for them. And of course, today the Raiders also, I think they're just getting warmed up. And Raja gets up, wanting a timeout. Yeah. Timeout, Chola Veerans. Yeah, there you go. Panir Selvam Raja Substitution. wants the timeout. Let's listen to Raja very quickly.
And there's substitution as well. அவாய்ட் பண்ணுங்க. தேர்ட் ரைடு கட்ஸ் ஆடி அது மாதிரி செகண்ட் ரைடு டப்புன்னு அழுத்தணும் வாய்ப்பு இருக்கும். புரியுதா? நான் அதை பார்த்தேன் ரொம்ப அசால்ட்டாக இருக்கக்கூடாது. புரியுதா? நான் கட்ஸ் ஆடி ஃபாலோ ஆடின்ற தம்பி ஒரு உனக்கே தெரியும் 2 பேருமே ரெடியாக இருக்கலாம் நல்லா ரீச்சுக்கு அந்த ரீச்சுக்கு விக்கியா மேமாத்தி ஆடு பார்த்து Okay, so 2-3 things he mentioned. I'll try to summarize what he said. First of all, he just said for the raiders of the Chola Veerans, you need to be careful on your second raid. Aluthi adipananga is that's what it is. They will try to attack you on your second raid itself as Vasant Murugan has come out for a do-or-die raid. Stand back, Gautam, stand back. As on that right cover, Vasant has already attacked you. No! Gautam says I'm going with a chain. Raided out. And 1 point Chola Veerans. Murugan down. They share the same surname. And this time the point goes to the other Murugan, Gautam. Oh yes, the Chola Veerans getting their second point, and it's good to see them getting it through. Something that they've often lacked on, that is defense, you know, and a very good block there. And I think the Raider also appreciated the effort there, as we have a do-or-die raid now, and the Chola Veerans will look to get another point here, Naveen. Ayappan Veerapandiyan just got that one running hand touch in the do-or-die race. That's it. And the previous one was the first tackle point there, Ryan, for the Chola Veerans. Now he tries best again, as he knows. He's very quick. He's agile. He's nimble. Can the defense be quiet? Intelligent. Bonus point, Chola He got the bonus point. 1 point, Nilgiri Knights. And he's been surrounded with that. Such a surrendered bonus point that was. Marvelous to see. Such an young brain thinking so swiftly on his feet. Wow, Ryan. Utilize that in your basketball match somewhere. Yeah, well, it honestly depends on the crowd and my coach. Then I would, change based on what's happening. As Surya Selvam now comes in for the Nilgiri Knights, and he tries the running hand touch. Did he get the touch? Raided out of bound. He's going to 1 have point, to go Chola out of Veerans. bounds. Yes, he slipped there, and it's good to see the Chola Veerans team entirely checking up on him. That's true sportsmanship right there, Naveen. Oh, totally. Just don't land your feet. Just leave it open. Yeah, don't put weight on that right knee, Surya. Just take it easy. Yeah, this is one amazing factor by all the Tamil teams. Oh, he's twisted his knees. I hope he's not cut out anything. He's gone into the lobby. That was what first was indicated by Praveen Kumar Ayanar. He did not see the twisted knee as our physio team immediately attend to him. But Ryan, I hope you also have not forgotten that Tala Sivakaran, the coach of Palani Tuskers, the previous coach, he lifted Madhu Kaverappa and he helped the opposition captain. That was the biggest level of Kabaddi spirit. Hampi Heroes and Palani Tuskers were clashing upon on a match. Madhu Kaverappa actually similarly twisted his ankle, not the knee. He just twisted his ankle, he could not get up. And Sivakaran ran. The opposition coach ran to the opposition captain. He lifted him off the Kabaddi match. I don't see it any game doing that. Forget even any local or international matches. I'm overall challenging everybody to that. Cricket, hockey, basketball, football. I have not seen that happen. Rightly said, Naveen. I think, coaches are often in that position where I'm not trying to say they're wrong, they're in a prideful position. So, they're often ordering, they are the ones giving the orders whenever things need to be done. And for one coach to go out of his way and do something like that is great. And for this raider, 1 point, he didn't Nilgiri go out of Knights. his way. For this defender, he did what he always does. Got that ankle hold and the Substitution, Nilgiri immediately- Knights. Please come. Number 18 in. Yeah. 66 Ankle hold out. was strong from 77 Velavan out. Muruganandan. He's very good Great. as a defender. I like him there. Not as a raider though. As there is 67. more substitutions that's happening. Yeah, because Surya Selvam had to actually come in and get revived because of that ankle hold. Because he's not there, there's a substitution that's happened for the Nilgiri Knights. I think ankle hold attempted. Gautam Murugan says that's okay. Left corner. Raided out. We need 1 Murichami. point, Chola Even if you Veerans. misses out, I am there on the right cover to send the opposition captain back. That's the first time he's been tackled.
Read. Strong block, Ryan. Very strong block. Yes, Arun Kumar now coming in for the Chola Veerans. As the Veerans have gotten a few points now in defense, it looks like that is working. Now they're struggling to get points in the raid, but Arun Kumar here, his gun once again for them. 3 points, Chola And, Veerans, Nilgiri jersey number Knights. 88. Oh, this is 9, a super raid. Take a look 10 at this. out. The Nilgiri Knights, nothing going their way right now. And the timeout is turning out to be very, very positive for them. Attacking on the back line, Ryan. That's a big problem for Santosh Srinivasan right corner. And then Manigandan Sudalamani comes across. And then even with that sort of an effort from Vasant Murugan, it's just taken off. I've not seen Manigandan Sudalamani actually miss out on a tackle. Oh my God. That is a half-changing raid, I will go ahead and call it. It's not a game-changing though, but it can definitely change this half in the favor of the Chola Veerans. They're coming back strong. Very, very good one. He just needs 6 raid points to reach 100 raid points now. Arun Kumar Anjapuli has done well. He's got 3 out of it and just needs 6 more. Brilliant stuff from the captain. He had gone in for some university work. This is what I asked Harshit. Where is Harshit? I asked him in the pre-show that will Velavan go to raid? And Harshit said, yeah, he may go. And I said, yeah, only to even irritate us, he might go and put in that solitary raid. But he should understand that there are only 3 defenders. Goes back intelligently. Yesterday, Ryan, because of his raiding fantasies, he just burnt all that chances what the Nilgiri Knights had to win. And he just gave away the match to Palani Tuskers. Yeah. I mean, that often teaches you the lesson as Sundara Vishwakanin, a do-or-die raid for him, which means he has to go in for it. He can try the bonus as well, but I'm sure the Chola Veerans defense will be smart enough to contain that. Looks like Bonus he's point, gotten the Nilgiri bonus Knights. already. He's confident. Yes, he's gotten the bonus. Nicely done by Sundara Vishwakanin here. Arun Kumar Anjapuli was not ready for the ankle hold, isn't it? He just stole that under his nose, Sundara. And now in a super tackle situation, it's a do-or-die race. Arun Kumar Anjapuli shouldn't have come in. He should have sent in the more quicker Ayappan Veerapandiyan, who's there on the match. The more swifter of the lot. Oh my God! Let us say 1 point, Yes, Chola cleared away Veerans, that jersey number point. 12 out. He wanted to go attack Arun, but he overran him. The previous occasion, he embraced him. This time, Wait. he just overran him. Slight pause, Ryan. Slight pause. And Arun saw an escape route. Yes, and that now is an added pressure onto Sundara Vishwakanin because he now would not only want to score a point but would also, have it in his mind to revive a man for which he needs to get a touch point because the bonus point will not let you revive a man. Bonus point, But Nilgiri nevertheless, Knights. if you can get the bonus, that's still 1 point and you continue to score. So smart enough, and the super tackle is still on. Correct. And, Sundara Vishwakanan actually said we were ready for the substitute. Couldn't allow us. That's a jersey pull for sure. He's still not crossed the midline. Let us say 1 point, Nevertheless- Chola Veerans, jersey number 66 out. Nevertheless, they will get it. A slight jersey pull, even if that tackle would have been there, Ran, it wouldn't have been Right. in the Nilgiri Knights' favor. Now, last man standing. Now, watch this. There's a jersey pull that happened from Manigandan Nethamani. There. Oh, yes. Rightly spotted. Naveen, there was a very clear jersey pull there. And the good thing that Sundara Vishwa has done is, by getting those bonus points, as you can see this, even if now the all-out takes Wow. place, which is going to happen, the Nilgiri Knights will still have the lead and it will be 1 point. Bonus So point, Sundara Nilgiri Vishwa Knights, has never gotten out, the 1 bonus plus 2, point 3 and a smart points. move by Chola him. Veerans. However, at the same All time, out, Chola Nilgiri Veerans has Knights. successfully come back into this match, especially after that timeout, and All they've in. been the strong and better team. Ryan, success is just not a word to, I think, compare what they have done. Strong dash by Gautam Murugan. Oh, Sundara Vishwakanan crashes into the advertising hoarding. You know what? It was 11-4 in favor of the Nilgiri Knights. Can you believe this turnaround from Arun Kumar Anjapuli? Yes, that timeout worked.
but it was 11-4, and then it was Half time. 12-4. Change the That's court. it. And the way it got changed is on this occasion from 12-4. Can you beat this? They have come back to score 9 points and just give away 2 points for the Nilgiri Knights. That's a mega comeback by the Chola Veerans in the first half, as that is what it suggests. The Raiders have brought them back along with a couple of defensive points, and that is helping them to keep up the pace against the Nilgiri Knights for the Chola Veerans. We'll sit for a short break, and me and Ryan will come back soon to see if the Nilgiri Knights have had that fighting effect to come back and push off the Chola Veerans ahead. Welcome back, everybody. I'm Navin Shori. Along with me is Ryan James this evening for this Tamil Derby, where the Nilgiri Knights started off like the champions, but then the Chola Veerans have come back like the fighters. It's very good to see the Chola Veerans coming back. Yeah, this is what the high pointers of the first half is all about. Nothing worked. The Raiders, the defense, nothing worked for the Chola Veerans for the first 12 points of the match. And then the all-out was inflicted. After the all-out, there was a small timeout that was being taken off by Panir Selvam Raja. He said, Raiders, be attentive on your second raid. Surya Selvam, I hope he's all fine. He should just come back nicer is what I feel. But Velavan has done well on that left corner. Got a couple of tackle points, kept the Nilgiri Knights in the hunt. But then the Chola Veerans, after that all in, this was the half-changing raid as I mentioned. There is where Arunkumar Anjapuli got the momentum going. He was completely warmed up, and then Gautam Murugan also says, even I am warmed up. And they have made a massive comeback. From 4-12, Ryan, they've given away the Nilgiri Knights only 15 and 13 as the Nilgiri Knights won the toss. They will be raiding first in the second half. Yes, and credits to Sundara Vishwakanan, because the last 3 raids of the Nilgiri Knights were all ones where he got the bonus points, and if you don't add those bonus points, Chola Veerans would have headed into the first half with a lead. So credits there. However, as Naveen said, you cannot not give credit to the Chola Veerans because they've been spectacular, especially the way they came back, and this is the intent and this is the intensity with which we want to see them play, Naveen. Yeah, totally. No doubt at all. And Gautam currently stands with 46 tackle points, and he also might be that defender to reach out 50 tackle points. And we already have top three defenders, 2 corners and 1 cover defender. Massive kick! Oh, what's that? He was just 1 point, Chola Veerans, jersey number 10 out. Dreaming. Yeah, because the day is gone. He was really evening dreaming now. Watch him. Boom. On the chest. Oh. Arun and his long legs. Yeah, well, whether he was daydreaming or evening dreaming, it was surely a nightmare for him. As Sundara Vishwakanan coming in once again, he has the bonus available. That's what he's gone for all the time. This time, the defender is gone for him, and he's decided to say, Sundara Vishwa, you can go back to the bench. First time in the second half, we see Saran Murugan actually going out there from the left cover to go for the attack. This is the first ever attempt by Saran, and he's been successful in that because he went at the right time, because Sundara Vishwakanan did not expect it at all, because the entire first half he did not even attempt for a single tackle. And now see what he's done, as still Vignesh Murugesan has actually come in, because he's come in place of Sujit Sagar, because Sujit Sagar did not look fit. He really struggled, and that showed in the couple of raids that he just went in and crossed the balk line. Vignesh, I would have wanted Mohandas Vishmohan to actually be looked upon as a choice than Vignesh Murugesan. Yeah, Vignesh is good, but Mohandas is better.
score is tied at 15 each. Chola Veerans completing the comeback by tying the score right now along with Nilgiri Knights. So from here on, how the teams are going to go, because both are, it's a neck-to-neck situation at the moment, because both the teams very much capable of scoring points, especially in regards to how the tempo of this game is gone. So Naveen, since both the teams are at a similar level now, what do you think should a team do from here on in order to complete a successful victory in this match? Interesting topic of discussion. See, first of all, for the Nilgiri Knights, they should not slow the pace down. That will be, a big blunder that will come back and bite them later, like say when there is 6 or 7 minutes left in the match. And for the Chola Veerans, their defense should hold on. As simple as that. If either of this happens, one team will take up that lead, and I will really hope the Nilgiri Knights' Raiders will actually go ahead and dictate some terms. This is not good. Marimuthu Selvam is still not looking to score points. He is trying to inflict the do-or-die raid, but the next raid will Time be a out, do-or-die Chola raid Veerans. for the Nilgiri Knights and Panir Selvam Raja. Wonderful time to take a time out. அவன் ஒரே ஒரு அடி அடிப்பான், மண்டை போட்டு அடிப்பான், கட்டிங் அடிக்க தெரியாது. இவன் ஃபாலோயிங் வந்தா வரும், அவனை இழுத்து தொடணும். அவன் செக் கீழே தான் அடிப்பான், முட்டி கீழே கன்ஃபார்ம் அவன் எடுப்பான். அந்த லைப்ரரி லைட்டா நீ தெரியக்கூடாது, ஜம்பில் போற தெரியக்கூடாது. Oh. Ayappan Veerapandiyan has been given a lot of instructions by both Raja and Arun Kumar Anjapulli for this do-or-die raid. I think they have plotted against Velavan. He rompa ulla pono, that's what they have told them. They have asked him to go as deep as inside as possible. And he's asked him to have a very quick footwork. Right. He's that's what they said. No! He did Raider the out. opposite. 1 point, Nilgiri Knights. They were plotting against Velavan Muruganandan. Santosh Srinivasan says, hi, I am here with the double thigh hold. Oh, take a look at that. That's a heroic move, honestly. And I'm sure in the slow motion it looked even more beautiful. Shout out to our camera team there as a do-or-die raid now. Marimuthu Selvam. Oh, yes! Wait. That is a beautiful raid. I think he's crossed well. Raider out of bound. 1 point, Chola Veerans. Good call. Akshay Desai agrees with you. Marimuthu does not. Raider, Can they you go want to review? Yeah, Defender. Raja is happy that even Raider. if they don't get the review on their side, Gautam has gone in for a nice dash. Mohan Gowda will be coming in. What's your challenge? Raider safe? Each only one. Raider safe. Go back. Yeah. TV umpire. Nilgiri Knights challenge is Raider safe 1 point. Audition, Raider out of bound, Raider out. Please review. Yeah, Rambir Singh has got some work to do, but Ryan, Mohan Gowda and Jai Kumar, they have a competition going around with themselves. The bonus was not taken. That was a do-or-die raid, by the way. The bonus was not taken, and Gautam thought that the do-or-die raid is for the defender. We've also spoken to Gautam in a very jovial and a funny way, saying, Gautam, listen, whenever there's a do-or-die raid, it's not for the defender, it's for the raider. And without the bonus, he stepped into the lobby already. Right, then forget the dash. Forget the dash. He stepped into the lobby, and this is going to be a very, very unsuccessful review for the Nilgiri Knights. It's a point for the Chola Veerans. Now, I don't think so they watched that, Ryan. The Chola Veerans went for a review saying, or rather the Nilgiri Knights went for the review saying he's just crossed the midline. And Rambir Singh is not even seen whether he's crossed the midline or no. Because without a touch, he's just gone into the lobby. And according to my books, that's out. Wow. Yeah, I think that aspect was not seen. Like, even I didn't think of that aspect because we all thought that, there was a touch, and that's why he went into the lobby, because in terms of crossing the midline, it was done properly. So yes, it's probably the identification of the fact that he didn't have any touch and he stepped into the lobby, which is why the point was given to the Nilgiri Knights. Yeah, and even that replay suggested Gautam touched him after Mari stepped into the lobby first. Yeah, Marimuthu, even he does not know what happened in that moment. The touch of Gautam came in after. Review unsuccessful. Raider out. Unsuccessful as expected. Raider out. Marimuthu is out of here, but Gautam, don't celebrate. This is not your tackle point. This is never your tackle point. It's Mari stepping into the lobby. Now, did he? Yeah, he comfortably crossed the midline. But he stepped into the lobby without any touch on the defender. And Gautam, I think, was just celebrating for the team, Ryan.
He's not a selfish person at all. Very well. The score once again, neck to neck, 15 minutes remaining in this game as Arun Kumar comes in for the Chola Veerans. Chola Veerans have completely changed their game style, because if you saw us early on in this match, all of yours on Fancode, I'm sure their first impression would have been like, oh man, the Nilgiri Knights once again, going all dominant on the Chola Veerans. But the Chola Veerans, as the name suggests, Veerans, it's like the Veerans were sleeping and they just woke up all of a sudden, and now they're just sitting there trying to take command of this game here, Naveen. Oh, was he blinded? Was he really blinded? No, Vasan Murugan. 1 point Chola Veerans. What a strong dash that was from Saran Murugan. My God. Ryan, that was a spear heading into him. Boom. Oh. That is like more than a spear. Like, honestly, if you want to know the impact of the spear, it is the end position of the raider. The position in which the raider completed, like he was just seated there. That is a spectacular move, and I'm sure that has to be the moment of the day. Even though I know there are 2 more exciting games coming up, that is definitely my moment of the day now. Yeah, totally. Let's go back to that replay. I love the facial reaction of Vasant Murugan. We can only see his facial reaction. Watch his face. Boom. And look at him. Oh. Like as if watching Rowan Atkinson. Bonus point, Nilgiri Knights. As there's a bonus being stolen away by Velavan Muruganandan. My God. Velavan has ran it. Gone in a bonus point. Do or die race for Arun Kumar. He just needs 3 more points. Ankle hold attempted. And Velavan gets another tackle point. The captain Raider Arun out. Kumar Anjapalli 1 point, has to Nilgiri go back. Knights. Diving ankle hold, that's good. Yep, And you know Nilgiri what, Knights now doing good on the defensive side. Take a look at that. Very nicely done. He dived in and gripped onto his ankle, and he was not letting go. There was no way he was letting go, as the Nilgiri Knights in 1 point ahead. Point ahead, but only 1 bonus point is, getting a pearl off an oyster. Every oyster won't have a pearl, Mr. Velavan. We saw what happened yesterday. Yeah, goes back empty-handed. That's okay. That is interesting. And you know what? Thankfully, somehow we missed seeing the bonus points of Velavan, because I would have been really unhappy to see him race. I was happy when he got lucky with the points, but when he don't tell me, no, Ram, our EBS operator is now taking revenge on me. Ram, I know you have that hairstyle of Picasso movie hero, that all your hair is on your forehead and your right eye is not clearly seen and it is covered completely. You wanted to irritate me and put off that bonus replay. Good comeback, Ram. Good comeback. The scoreline now: Ram 1, Naveen 0. Yeah. Very much. I said I was happy I didn't see that bonus. Come on, Ram. Be ready for this. Come on. I have a chance now to get all equal on our EBS operator, Ram. Gives us that replay. In a do-or-die race. Goes out there and Raider taps safe. the midline. 1 point, Nilgiri Knights. And Jersey he's number once 33 again out. taken a point because of Taran's error. He's 2 got points. 2 points. Nilgiri Knights. Jersey number 33 and 11 out. Oh my God! Those long legs, Ryan. You just saw what happened? Before Time he out, touched the Nilgiri midline, Knights. He just back kicked Gautam, who was just standing right there. இப்போ இன்னும் மிஸ்டேக் பண்ணிடுது தைரியமா இருக்கு மாதிரி வசந்த் டேய் இப்போ நம்ம கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்லலாம் வாசல் எடுத்தாலும் அவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அவன் மட்டும் ஆடுவாங்க டைம் இருக்கான வந்தனே ஐயப்பன் சந்தோஷ் மாதிரி ஆடிட்டுமா நீ ரைட்ல ஆடுறியா டேய் வேணா இவ்வளவு யூஸ் பண்ணிக்க நீ கவனமா Oh, right. Coach also has told Velavan use பண்ணிக்க. That means if needed, go with Velavan on the raid. But he wants the raider to be safe. See, that's a better option. I always go out there and support Velavan going in a do-or-die raid because that saves the raider. But if he gets tackled out, nobody is there on the left corner. That's the problem.
That's the problem, Brian. And Vignesh Murugan now is under pressure for the 200 raid. And as he crosses the midline, Radar I think safe. he has. Bonus plus 2 Yeah. points. Chola Oh, Veerans. super Jersey raid number in a 12 and good 66 200 out. raid. That's massive. There we go. Moment that was put across, I mean, as to how important he is, especially on the left corner. He's gone and compromised himself, and a beautiful raid, a super raid to tie the game. And this game is very much on, because we all thought maybe the Nilgiri Knights might once again try and inch away, but the Chola Veerans have come back. Or take a look at this, Vasant Murugan is just 1 gone and point attacked Nilgiri the left Knights. corner and got Jersey the number point. 66 out. And that was as fast as an arrow. Arrow going in for the toe touch. Right there. And Vineet did not have any clue about that arrow coming in. Oh my God. We always have spoken about how Velavan Muruganandan actually goes out there and picks up that pearl from an oyster. I tell you that in Tamil. Velavan, எல்லா சிப்பிலையும் முச்சு கிடைக்காதுப்பா. Right? You understood what I said? No, I did not understand what was stated there. And Right, no, I'm sure yeah. the defender here did not 2 understand what points. Chola happened. The Veerans. way Jersey the number Raiders 66 and 88 slid his out. way back into the midline. This is a big error. Manigandan Sudalamani going across for the dash first on Arun Kumar. Outside the block line is tough. Oh! And Arun Kumar just did what Velavan did. Even Arun said, even I can use my long legs. Remember that? Velavan actually kicked out with his long legs before touching the midline. And it was not intentional at all. And even Arun Kumar unintentionally kicks Santosh Srinivasan in his previous race. Right, long doing the job. So what I need to say was for Velavan, simply is oyster, okay, where you have the pearl, and only few oysters can get the pearl. And I'm talking about the natural pearl inside an oyster, right? Like I just said, not all the oysters will have pearl. That's what I said. Substitution. Nilgiri Knights. Please come. Number 4 in. 17 out. Oh, 2 in. K. Harish 18 out. comes in. Yelumalai Murthy comes in. Mari Muthu has been taken off. The captain taken off and is being replaced by another captain. K. Harish. Yeah, K. Harish, Vishwakarnan comes in. another very capable player who had a very good stint early on, but he did lose his way a bit. But I'm sure he's still a key player for them. Just like this man, 1 Vasant point, Nilgiri Murugan Knights. is gone Jersey in number and 11 taking one more out. point, and he flexed it nicely as the game is tied once again. Yeah, Pawan Kumar Sharawat will be really happy with that diving hand touch. He was the one who actually introduced that to the Kabaddi world. Pawan, he was being called Pawan Putra also for that diving hand touches on the covers. And even Gautam Murugan, one of the best defenders, has not been able to gauge that one. Right, Nilgiri Knights now trying to fight back. That's good. And from a 20-20, it's become 22 all. Arun Kumar just 1 point away Static from timeout. a century of raid points. Now, who do we go to listen to? I've told Deva, first the trailing team. defense Whether Deva wants to go தம்பி to உனக்கு Chola உனக்கு Veerans, கேள்றா right. நீ ஆடிலாம் நீ இன்னொன்னு சொல்றேன் பாரு தம்பி நீ வீக்கா இருக்கிறன்னு சொல்லிட்டு இவன் டீப் அட்டெம்ப்ட் வரும் உள்ள நல்லா வந்தா டபுள் தகவல் எப்படின்னா ரொம்ப அட்வான்ஸா இருக்கும் அடுத்து அடிச்சுக்கணும் இல்லைன்னா வேணாம் ரொம்ப டீப் வரலன்னா அட்டெம்ப்ட் விட்டுரு எனக்கு எப்படி இருந்தாலும் வரும் இந்த அட்டெம்ப்ட் அவன் பண்ணுவான் ஒன்று உனக்கு வரும் ஏய் இவனுக்கு வந்தாலும் நீ என்ன பண்ற பட்டுன்னு அடிச்சிரு இல்லைன்னா விட்டுரு ஏறி ஏறி இறங்க Right. ஏய் தம்பி உனக்கு கிடைச்சதுன்னா பண்றதை பண்ணு காலு கொஞ்சம் ஃபுட்டவர் மாறுது பாரு ஏய், கொஞ்சம் இதாகுது பாரு அதை பார்த்து ஆடு பேசுறா தம்பி பேசுறா Okay. Right. First of all, what Raja told was for the defenders. I think he's suggesting that Saran Murugan might be the weaker link and they will come to attack him. And when that happens, Praveen Kumar Ayanar has to go out there and attack the raider. That's what he said. அவன் வீக்கா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை அடிக்க வருவாங்க. That's all very clearly meant that Saran Murugan is just without one attempt. And if the raider comes against Saran Murugan, it's very clear suggestion that the Praveen Kumar Ayanar should go for the attack on Vasant Murugan. But Vasant,
Very intelligent. He goes out there and starts as a left raider, then converts himself as a right raider. And Praveen Kumar has been dashed out. 1 point, guys. 1 point for sure. You've seen the defenders 1 dashing point the raiders. each. What is that? Now, they'll have to challenge this. They can't challenge this. How? Right, when a defender is being dashed out, I think the raider. Red. Oh, okay. I think he did not have any contact with the defender. And that is why the other team members have come in to tackle Vasant. And that is why it was given 1 point each. Yeah, good decision from Akshay. Now this is a do-or-die raid, Ryan. Yep, Ayappan in the do-or-die raid. Let us say Ayappan 1 doing point, it Chola strong. Veerans. Jersey number And a 66 very out. good count from Ayappan, and Manikandan is disappointed once again. Sudalamani is not happy at all because this is what happened to Nesamani. Yeah, look at Sudalamani there, standing out there and shouting out to his partner. And Ayappan Veerapandiyan is very good, right? He's slim, he's short, he's very agile, and Harish has been tackled out. That is what the coach said. Raider out. Harish will come 1 to point, Saran Chola Murugan Veerans. from the left cover. That's what exactly happened. And Praveen Kumar Ayanar came across. See, it's so good to listen to your coach, Ryan. Yeah, actually, but this is a statement tackle from what I saw, because the Chola Veerans, you can see the entire team getting in on it. They all wanted a piece of it, and the Nilgiri Knights are down to just 3 men. This is a very crucial moment because we can see it's just 4 minutes and 50 seconds remaining. If the Chola Veerans can get an all-out here, it will be very big. It will be very important. So the Nilgiri Knights have to be strategic from here on. No. Arun Kumar is intelligent. He will go back, Ryan, because all 3 were defenders. All 3 were defenders. Yelamalai Murthy and Manikandan Nesamani and Velavan. So all 3 were defenders. Arun Kumar went back. Now what they'll have to do is they'll have to tackle out Velavan. That's a lovely diving Raider control out. from 1 point, Praveen Chola Kumar Veerans. And K. Harish does not want to see that, as even Vasant does not want to see what just happened. They're turning away their faces. This is a game-changing tackle for sure here, Ryan. This is going to dictate terms. And now Arun can just go back. Inflicting the do-or-die raid. No, that was not intelligent. That was really not intelligent by the captain. It's a strong ankle hold. Yelamalai Murthy will not leave both the ankles. And he's been covered in the arm Raider out. of Manikandan. Super tackle. It's 2 a points, super tackle. Nilgiri Knights. Wonderful work from Sudalamani and Yelamalai. He got too greedy, Ryan. Substitution, Nilgiri Yes, Knights. Please he come. got too greedy Number there, 17 in. and he's 2 paid out. the expensive price of 2 points. Just when you had a Red. 3-point lead, you could have possibly put out a all out over there on the opposition, but you've given the opposition 2 points, and a very big moment there for the Nilgiri Knights, because that's brought them back into the game. And right now Marimuthu Selvam has the opportunity to get a point. He's not gotten a point till now, and he would love to get a point here. Yeah, he was being substituted out. Now he is re-inducted back in on the mat. Santosh Srinivasan has been revived. That is not looking good. That's really not looking good for the Chola Veerans. Arun Kumar. Oh, he has such a good Kabaddi brain over his shoulders, but that time speed getting the better of him. He should have just gone into inflict the do-or-die race instead of getting tackled out, because there were just 2 defenders, and Marimuthu Selvam has been struggling today. So even if Mari would have been reinducted back in, that would have been on a do-or-die race. Not a good strategy. I just said Praveen's tackle was a game-changing one, and this is good. This is very, very good from Praveen. Raider out. 1 point, Chola Veerans. Not a raider. A defender comes in. He's also short, and the dash was very much on time. by Substitution, Murugan. Nilgiri Knights. Please come. Number 2 in, 17 out. Yep, Santosh will definitely not be happy Red. with that, because he's been dashed out, and the Chola Veerans now, this game is just so neck to neck, because we can't say anything when Chola Veerans have a 2-point lead, because the Nilgiri Knights can also just simply get a super tackle like they did in a previous instance. Actually, the last time there was a similar instance, this is what happened. But it looks like Arun Kumar has gotten the point. That should be his 100th point.
Arun Kumar going big, 1 gets his point 100 Chola point in Veerans. Jersey style. number 9 out. Totally in style and so much in control. Substitution. Running Nilgiri that Knights, much please come. on Number defenders. 17 in. 2 out. And Raja Ram is going out there having all the substitutions Great. that's going to save this game. Look at this, 175 raids. Yeah, as a captain, all those 75 extra empty raids had to be put in to save the team and the match. Now Marimuthu. Chola will give him only the bonus point. Gautam, watch out. Don't get eager. Don't get greedy. No, Gautam, no. Hold yourself back. I'm only concentrating on number 11 right cover, Gautam. Only he has to go. And he does not earn this time. Bonus point. Nilgiri Goal Knights. for the Raider Aravalli. out. 1 plus 2, When 3 points. Marimuthu was Chola Veerans. completely surrounded All out by the Nilgiri other Knights. defenders. I don't think Raider, Raider. Nilgiri Knights is going to come This back, could- Ryan. All in. I honestly don't know. And the way Chola Veerans have come back into this game, the way they established themselves into this game after the first 10 minutes or so in the first half, they've been a side that is so invested in this game, and I don't see them heading into a situation where they're going to lose this game from here on, as the Nilgiri Knights will continue to do Number stuff 17. like that. And take a look at that. Arun Kumar take a bow because he's just shown us what this game has been like. The Chola Veerans have done exact same thing to the Nilgiri Knights in regards to winning this match, just like what Arun Kumar did right now with that defender. Yeah, totally dominant, isn't it? 1 point Marimuthu Chola Selvam. Veerans. Jersey number 17 out. Just did not understand what to do. Marimuthu just went in for a solo block on Arun Kumar because he's frustrated. He's not got a raid point today. Completely, off his true colors. Look at Gautam Murugan. Raid. High five for him. 5 points out of the 8 tackles that's attempted. So 3 have gone wasted. That's also there. Watch out. Velavan, enough. My God. Raider out. 1 point Chola Veerans. Raid out. I think the dash was first of all successful, and Velavan thought he's not been dashed out, and he wanted to go for more points. Yep, That's a let's very take a look strong at the back hold. replay. We can Raid. He was out. Yeah. He was dashed out first instant on Karan Murugan's back hold. He tried to turn, that is good. Velavan has that in his mind that he's a half raider. But sometimes that is not working out, and even today it's not working out. Arun Kumar Anjapuli, 10 points today. All 10 have come in touch points. No bonus points. So 10 Time times out. Nilgiri Knights. he sent the defenders out. What? Ah, there's a timeout now. Second. Raja Ram, let's listen to Raja Ram quickly. போடா தம்பி புடிச்சு வேற அவன் கிட்ட போக கூடாது அவன் பண்ணின புடிச்சு தள்ளுவான் நீ ரைட் தான் போறா இல்லனா வந்துரு. Okay, so I think what Raja Ram would have told is we have 7 points as a difference. Just go across the block line. No, Gautam, no! Come on! 1 point Nilgiri Knights. Jersey number 11 out. Get 1 point out of this match. Yeah, they were never Number 17. getting that 1 point. But second match in a row, Ryan. Match they have over. lost it in the challenger round. For a team that was unbeaten in the booster round, challenger round is started off as I think they've been starting off as a fresh series. My God, massive victory for the Chola Veerans. 33 for them against Nilgiri Knights 27. Massive victory indeed, and Nilgiri Knights, honestly, I'm sure they're going to get a lot of treatment from their coach, especially now, because this is not what anybody would have expected out of this team, especially as they would come into this challenger round. We thought, okay, fine, this is where a team starts their build-up towards, keeping the Southern round in mind as well. And looks like Chola Veerans are a team who's, come in with that preparation, and the way they played today, they had a shaky start, but the way they've come back, oh, that's spectacular, isn't it, Naveen? Just marvelous. There's no other term to actually go out there and use that. They came back in the first half, and then the second half also. They were very good, and they did not allow the Nilgiri Knights Raiders, especially Marimuthu Selvam today, being completely off color and not in his original form, has hurted the Nilgiri Knights very badly.
And Ryan, in the second half, Chola Veerans have got 20 points. Now, where do you go out there and get that redeemed? 20 points being scored in the second half by the Chola Veerans. That is humongous. And on the other side, the Nilgiri Knights actually were on 15 when the first half ended. So, like 27 minus 15 is just 12 points. Can you see where that 8-point difference came in? So 12 points only for the Nilgiri Knights in the second half as we are watching that high pointers, and this could have been Nilgiri Knights' moment to make a comeback after the super tackle, but they did not utilize that one. And then the Raiders especially did not work for the Nilgiri Knights today. That is why only 12 points overall in the second half. Yep, that's why the problem was for them, because they just struggled every now and then. I think the Raiders had more positive moments after getting dashed out or after getting knocked out. They would do something, and cross the line. However, we can take a look at the summary here. A 6-point separating these two teams. When it comes to rate points, Chola Veerans getting one more than the Nilgiri Knights in terms of tackles, 11-9. A couple of all-outs for the Chola Veerans compared to the first all-out of the match, which was inflicted by the Nilgiri Knights. However, 2 extras, 2 super rates for the Chola Veerans. Not to forget that one super tackle, which Naveen said could have changed the Nilgiri Knights' fortunes in this match, but it was not good enough to change their fortunes in this match. Yeah, totally not good enough. And see that 2 super rates where bonus plus 2 was given to Ayappan Veerapandiyan. That too in a do-or-die raid. And that is why I said the Raiders of Nilgiri Knights have not worked today. But Arun Kumar Anjapuli comes back after missing out a few matches in the Yuva Kabaddi series. Comes here, scores his 100th raid point, and then also goes about his job as easily as it is for the captain. 10 raid points out of 22, which is okay. Strike rate 45 as expected. He's kind of that Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane types in the raiding, isn't it? Yeah, well, that's what his tempo says. And total of 9 tackles, which got 5 tackle points. Gautam Murugan getting their high five, and a very important high five for him, because the Chola Veerans often struggled in defense, and that's where Gautam stepped up in this big match against a big team, and he's put it out well, very nicely for his team there, Naveen. And the next match is also a big one. Periyar Panthers. They will be eyeing the Chambal challenges. Chambal challenges yesterday gave us a thriller, a goosebump of a match. But today against the Periyar Panthers, can Durgesh Kumar get a lot of raid points against Lokesh Gosalia? That is the contest that's coming up. Stay tuned at 6:45 as we will just go out there and take a break and come back soon at 6:45. Thank you so much, Ryan. It's always wonderful to be with you on the commentary box. I'm Naveen Shori signing off. Thanks a lot, guys.
After 11 matches unbeaten streak, Nilgiri Knights consecutively lost their second match in the Challenger round. Welcome to the post-match presentation of match number 97 of Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners first. Broadcast partner FenCode, Fantasy partner Dream 11, Physio partner Department of Sports Sciences College of Physiotherapy, Hospitality partner Ginger Hotel और Healthcare partner Ramakrishna Specialty Hospital. और चलिए आज हमारे साथ presentation में जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर अविनाश कुमार सर, एंटी करप्शन यूनिट युवा कबड्डी सीरीज। आपका तहे दिल से स्वागत करता है सर युवा कबड्डी सीरीज। और ये मुकाबला खेला गया चोला वीरेंस बनाम नीलगिरी नाइट्स, और एक दफे नीलगिरी नाइट्स ने लगभग 8-9 पॉइंट की लीड बना ली थी बड़े शुरुआती क्षणों में, बट उसके पश्चात चोला वीरेंस वो फॉर्म में आया, वो फायर अप हुए और इस मुकाबले को अपने पूरी तरह से नाम किया 33-27 के साथ। सीधा चलेंगे अब अवार्ड्स की तरफ और शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट विनर ऑफ द मैच के साथ। तो चोला वीरेंस के लिए एक टीम नहीं, एक बल्कि बहुत बड़े खिलाड़ी भी वापस आए। वो थे अरुण कुमार अंजाबोली और आते ही अपनी टीम के लिए निर्धारित किए 10 रेड पॉइंट्स। आइए देखते हैं। What a benchmark of comeback यहाँ पर प्रस्तुत किया है इस खिलाड़ी ने, बहुत ही अद्भुत लगाया और अपनी टीम के लिए सुपर 10 के साथ जीत दिलाया। तो भाई ये समय है बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की बात करने का, वो रहेंगे चोला वीरेंस के। वन मोर टाइम, अगर पिछला मैच वो नहीं चले तो समझ जाइए अगला मैच वो हाई फाई बनाने वाले हैं। गौतम मुर्गन ही 5 टैकल पॉइंट्स और अपनी टीम के लिए सील किए बिग विक्ट्री। देखिएगा और जब जब ये खिलाड़ी अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होता है बड़ा ही एफर्वेसेंट नजर आता है, और आज भी वैसा ही अफेक्शनेट कर देने वाला इनका परफॉर्मेंस। आइए अब सीधा चलेंगे कबड्डी कमाल ऑफ द मैच की तरफ। तो चोला वीरेंस से एक और ऐसा टैकल नजर आया जिससे कि पूरी तरह से सोलो वहां पर किया गया था, और वो था कमाल मूवमेंट जिसे लगाया था सरन ने। सो आज जो मिक्सचर आप सभी को नजर आया सोलो टैकल्स और कॉम्बिनेशन टैकल्स का, जिसके चलते चोला वीरेंस ने अंत में आते आते मुकाबले अपने नाम के। बट दैट्स ऑल फ्रॉम द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
Good evening, all. Match 96, Chambal Challengers versus Periyar Panthers. चंबल चैलेंजर टकराएगी पेरियर पैंथर्स के साथ इस एडिशन के अंदर मेरी और आपकी ये आखिरी मुलाकात। नमस्कार, स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का मैच नंबर 98 युवा कबड्डी सीरीज का समरी एडिशन। जोश, जज्बा, जुनून, इन सब का तो पता नहीं, लेकिन जज्बात बहुत ज्यादा जुड़े हैं युवा कबड्डी सीरीज के साथ। तो चलिए मुकाबले की शुरुआत करते हैं। दोनों टीम्स को मैट पे बुलाते हैं। ओवर टू हर्षित। तो दोनों ही टीमें अपने अनुभव के साथ एक कठोर शिक्षक के तौर पर परीक्षा ली है इस कबड्डी के मैच ने कई दफा उन दोनों टीमों की। अब कौन से पार्ट ये दोनों टीमें पढ़कर एक दूसरे को चुनौती देने के लिए हैं बेकरार। आइए सबसे पहले बुलाने जा रहे हैं चुनौतियों के सरताज जिन्होंने की है जीत के साथ शुरुआत, चंबल चैलेंजर।
शिकार के लिए है तैयार और रखते हैं अपने खिलाड़ियों को बेकरार। आ रहे हैं लोकेश और अनुज की कॉर्नर जोड़ी से परिपूर्ण पेरियार के पैंथर्स, पेरियार पैंथर्स। एक और पड़ोसियों के बीच की लड़ाई, चंबल चैलेंजर्स जो कि तीसरे पायदान के ऊपर है तो पेरियर पैंथर्स दूसरे पायदान के ऊपर। एक मुकाबला आज के दिन का खेला जा चुका है, लेकिन दूसरे मुकाबले के अंदर डिफेंस थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। पेरियर पैंथर्स की तरफ से लोकेश और अनुज की वो जोड़ी जिसके अंदर कवर पोजीशन के ऊपर भी तहलका मचाते हुए खिलाड़ी नजर आएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं चंबल चैलेंजर्स के स्टार्टिंग 7 से। संस्कार मिश्रा, अजय, एम गोपी, ये ट्रायो है जो रेडर्स का है। दुर्गेश अभी भी पूरी तरीके से फिट नहीं, शायद उसी के चलते मैट पे अभी आपको नजर नहीं आएंगे। हेमंत, अनिकेत, ये खिलाड़ी आपको कवर की पोजीशन पे नजर आएंगे। दुर्गेश साहू है जो कॉर्नर संभालते हैं और अपनी टीम के लिए वो काम बखूबी निभाते हैं। लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपको रिहान शेख नजर आने वाले हैं। वंश, अभिराम, अक्षय, लखन, ये वो खिलाड़ी है जो फिलहाल सब्स्टिट्यूट पे है, लेकिन कोच चाहे तो इनको मौका मिल सकता है। YKS में मेरे साथ एटलीस्ट इस एडिशन में आखिरी बार स्वागत है राधिका का। Good evening, Ayush. Yes, this is Periyar Panthers who have started on a big note yesterday with Chambal Challenge, winning over Hampi Heroes. And this is Sardar Chaudhary and Richpal Jhat and Gopal Singh will be in the raiding unit, and Rahul Chaudhary, Manjeet Mitra in the covers. And also, this is the dreadful combination on the corners: Lokesh Gosalia and Anuj Saini. Nakul Saini, Rohit, Nitin, Monu, Mukesh, they might get an opportunity to get into the match quite often. एक लीथल कॉम्बिनेशन जो आपने बताया लोकेश और अनुज का, लेकिन रेडर्स के उस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको बेस्ट खिलाड़ी जो इस एडिशन में अभी तक परफॉर्म करते नजर आए हैं वो गगन है। 195 पॉइंट निकाल चुके हैं, 18 मैचेस लिए इन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए। दुर्गेश कुमार खेलते हुए नजर जरूर नहीं आएंगे, 17 मैचेस खेले, उसके बाद वो इंजरी कंसर्न। 159 पॉइंट इस खिलाड़ी के नाम भी है। 155 पॉइंट निकालने वाले संस्कार अभी एक्शन के अंदर आने वाले हैं। 22 मुकाबले, सबसे ज्यादा मुकाबले इस खिलाड़ी ने लिए जरूर है। After yesterday, they had a dreadful combination with Durgesh though. But yeah, this is a top 3 defender so far, and Lokesh Gosalia still leading the chat. We'll be witnessing him play straight now with 64 tackle points and Ankit Jat. And this is the player we would be eyeing on as well in the future. The 55 tackle points and very close in the contest. Shiv Kumar also got into the 50 bracket as well. लेकिन लोकेश जो ना सिर्फ अपनी टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्नर की पोजीशन संभालते हैं बल्कि कप्तान की भूमिका भी निभाते हैं। तो वहीं सागर अपने मुस्कुराते चेहरे के साथ, वो टॉस उन्होंने कराया, वो सिक्का वो पक्ष में गिरा चंबल चैलेंजर्स के। राइट कोर्ट का उन्होंने फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि पेरियर पैंथर्स के डिफेंस से पहले चेक होने वाले उनके रेडर्स के अंदर कितनी क्षमता है। रेडिंग की जब बात करी जाएगी ये खिलाड़ी का नाम जरूर लिया जाएगा। संस्कार अपनी टीम के लिए ही नहीं बल्कि इस एडिशन के अंदर भी टॉप 3 रेडर्स में तीसरे पायदान पर शुमार है। 22 मुकाबले खेले, 155 पॉइंट निकाले, रेडिंग का स्ट्राइक रेट 66 से ऊपर का नजर आता है। राधिका साफ दर्शाता है ये खिलाड़ी अपनी कद काठी का इस्तेमाल कितनी अच्छी से करता है वो हम सभी जानते हैं। Absolutely uses the features of like running hand touch and bonus quite often. And this is Lokesh Gosalia, 22 marches, 64 raid points, raid strike rate more than 50%. As a captain, he is leading from the front and one of the topmost defenders for this edition. वो ब्लू कलर का बैंड वो इस बात का प्रतीक है कि सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट यदि इस एडिशन में किसी ने अब तक निकाले हैं तो वो लोकेश है। अभी चैलेंजर राउंड चल रहा है, अगला समिट आना है, उसमें भी और कुछ दमकम दिखा सकता है ये खिलाड़ी। चंबल चैलेंजर्स 24 मुकाबले के लिए 10 में जीत मिली, 10 गंवाने पड़े और इस एडिशन में सबसे ज्यादा यदि किसी ने टाई खेले तो चंबल चैलेंजर्स की टीम है। 4 टाई खेले हैं। विन परसेंट जरूर इनका 50 से कम आपको नजर आता है, लेकिन इसके अंदर इजाफे किए जा सकते हैं। इनके पास खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। लास्ट 5 मैचेस में 2 जीते हैं, 3 गंवाने पड़े हैं इस टीम को। पिछला मुकाबला जीत के थोड़ा सा मोमेंटम आया होगा राधिका, और अब चाहेंगे कि वो मोमेंटम इनसे दूर ना जाए। आस्क द एक्सपर्ट क्वेश्चन आया है और राधिका साथ में का मतलब है कि जवाब अच्छा मिलेगा। आर द चंबल चैलेंजर्स द मोस्ट अटैकिंग साइड इन दिस एडिशन ऑफ YKS? प्रिया शर्मा ने ये सवाल पूछा है राधिका। Yes, having the 2 best raiders from the top 3. We had Sanskar Mishra and also Durgesh Sahu. I'm sure from yesterday's 2 Super 10s, definitely that's the best raiding trio we have in a team.
एक अच्छा ट्रायो है, उसके साथ में खेलती ये टीम नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ पेवियर पैंथर्स की टीम 24 मुकाबले खेले, 15 में जीत मिली, 9 गंवाने पड़े। विन परसेंट इनका बहुत अच्छा नजर आएगा यदि आप कंपेयर करें इनकी ओपन एंड चंबल चैलेंजर्स के साथ। लेकिन हर राउंड के हमने परिस्थितियों को बदलते देखा है राधिका। जैसे ही आप बूस्टर राउंड में घुस गए थे, हमने देखा था कि कई टीम की पोजीशनिंग चेंज हुई, चैलेंजर के अंदर भी वो होने के आसार। Very much, because a lot of injury concern might come up when your body gets to that fatigue level. And also yesterday we have seen Durgesh playing in the starting 7, and today we don't see him. Do you think Periyar Panthers should work more on their reading skills? राहुल सिंह का ये सवाल है। Of course, because when you have such corner defenders who've been phenomenal, if the raiding unit would support that corner defense, this team would be unstoppable, Ayush. इस सवाल का मतलब यह है कि द रिच बॉय रिचपाल जाट, उनको कटघरे में खड़ा किया गया, सरदार को कटघरे में खड़ा करा गया है, और आज इस कटघरे से बाइज्जत बरी होने के लिए खेलते हुए ये दो खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। चलिए, समय हो चुका है काउंटडाउन का। काउंटडाउन के बाद लाइव एक्शन। क्लीन स्पोर्ट्स, फेयर स्पोर्ट्स के उस स्पिरिट के साथ चलिए अमर एम्पायर 2 की रेफरी की उस विसल के साथ में मुकाबले की शुरुआत करते हैं। पहली रेड रिचपाल जाट पेवियर पैंथर्स की तरफ से। सवाल आया था कि क्या पेवियर पैंथर्स की टीम को अपने रेडिंग डिपार्टमेंट में उस स्किल सेट के अंदर क्या और इजाफा करना चाहिए, और उसका जवाब आज ये खिलाड़ी 40 मिनट के खेल में दिखाएंगे राधिका। Absolutely, if the Raiders have an attacking mode, that would only give confidence to the rest of the defense as well, and they have started off well with a bonus. पहली रेड के ऊपर पेवियर पैंथर्स की टीम को बोनस के चलते वहां पॉइंट मिला है। सबसे लंबे कदमों ने सबसे बेस्ट डिफेंडर के सामने बोनस निकालने की कोशिश की। संस्कार मिश्रा बोनस लेकर आएंगे, और किस खिलाड़ी के सामने? लोकेश गोसलिया। उनकी घर नहीं, वो डैन है, उसमें से पॉइंट निकालने का मतलब जिगर बहुत बड़ा उस खिलाड़ी का। Absolutely, and when Durgesh was playing top notch yesterday, he just went back, took the back seat. That's a lovely combination they had. Wait. Number 4 गणना की जाएगी। चंबल चैलेंजर्स की तरफ से नंबर 4 यानी कि दुर्गेश साहू को बुलाया गया है। क्या दोनों टीम को एक पॉइंट दिया जाएगा? इंतजार करते हैं ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का। एक तरफ रिचपाल जाट खड़े हैं, तो दूसरी तरफ अंपायर के साथ में रेफरी कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। और राधिका, शुरुआती क्षणों के अंदर यदि ऐसे संदिग्ध भरे फैसले होते हैं तो टीम का कॉन्फिडेंस, मोराल थोड़ा सा कम होता है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी हमारे रेफरीज की, हमारे एम्पायर्स की। वो एक क्षण भी नहीं लेते और निश्चित तौर पे उस फैसले को सटीक करने के लिए चले जाते हैं। दोनों ही टीम को एक पॉइंट मिलेगा। रिचपाल बाहर, साथ ही साथ आपको बाहर जाते हुए नजर आएंगे चंबल चैलेंजर्स के डिफेंडर हेमंत भी। Absolutely, yeah, that was a brilliant tackle, but then one of the defender had to step out with force. So the referees did not disappoint anybody, Ayush. They literally did. और यही तो होता है, वही करना चाहिए। मुकाबला बराबरी पे चल रहा था, दोनों टीम को एक पॉइंट मिलने के बाद अभी भी मुकाबला बराबरी पे ही रहेगा। 2 मिनट का खेल हुआ है, दोनों टीम ने 2-2 पॉइंट निकाले हैं। लगातार रेड रिचपाल ने लगाई थी, लेकिन अब सरदार चौधरी अपनी पहली रेड पे आते ही मेट को प्रणाम किया, बॉक को पार किया। इसका मतलब ये भी है कि अपनी रेड को वैलिड बना लिया। डिफेंस क्योंकि 6 का है, थोड़ा सा हाईलाइन खिलाते हुए नजर आएंगे। एक कॉर्नर के ऊपर रेहान है, दूसरी तरफ चेन छोड़ के रखी है दुर्गेश साहू ने। सीधा सामना सरदार का, वैसे तो दुर्गेश से होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लेफ्ट कॉर्नर की तरफ हल्के से शफल करते हुए नजर आए, लेकिन पॉइंट लेके नहीं जाएंगे, एम्प्टी हैंडेड जाना पड़ेगा। Exactly, because he was just playing at the box line, so his intentions were clear that he didn't want to go deep in. Let us say 2 point Chambal Challengers, jersey number 4 and 6 out. बैक ट्रेल दिखा दिया।
और ऐसे दृश्य आमतौर के ऊपर आपको इस डिफेंस में नजर नहीं आते। पेवियर पैंथर्स एक सदैव डिफेंस के लिए जानी जाती है। सरदार चौधरी अगली रेड पे। पिछली रेड एम्प्टी गई थी इस खिलाड़ी की, तो वहीं दूसरी तरफ रिचपाल जाट ने पॉइंट निकाल लिया है अपनी टीम के लिए। इनके ऊपर वो हल्का सा दबाव रहेगा। हालांकि यदि आपको एक्सपीरियंस की बात करें तो रिचपाल से थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और उसी के चलते फिलहाल मैच को नापते हुए नजर आ रहे हैं। 2 अंक का फासला चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में है जरूर, लेकिन सरदार क्या हो सकते हैं अदरदार। ये बचे हुए लगभग 36 मिनट का खेल निर्धारित करेगा। Yeah, again on the other side, this is Sanskar Mishra. He's been phenomenal throughout the season, and he's been quietly supported or very well supported by Durgesh Sahu. I'm sure he should be coming back, very fit soon, because this is definitely a bigger challenge now in the challenger round if your lead raider does not perform. मुकाबले की पहली डू और डाई सरदार चौधरी। बैक टू बैक 2 एम्प्टी हैंडेड जाने के बाद कोई भी खिलाड़ी वापस एम्प्टी हैंडेड जा नहीं सकता। दरअसल तीसरी रेड को डू और डाई की परिस्थिति कहा जाता है और उसमें या तो आपको पॉइंट निकालना है या ओपोनेंट को देकर आना है। यहाँ पर रिहान ने डबल थाई होल्ड की, कॉम्बिनेशन टैकल, छुई मुई के फूल की तरह चंबल चैलेंजर्स का डिफेंस टूट पड़ा। के पास का कोई रास्ता नहीं, लेकिन हाँ लॉबी के बाहर आप जा सकते हैं, उस बेंच के ऊपर आराम आप फरमा सकते हैं सरदार। Absolutely. On the other side, when we talk about, Periyar Panthers on the defensive strong unit, they haven't done much so far in the defense unit, but this is the right time that they could go for it, having a super tackle opportunity. Ajay Maravi, who just got 2 points, is it, Ayush? हाँ, पिछली बार जब ये आए थे तो 2 पॉइंट लेकर गए थे। मल्टी पॉइंटर रेड इन्होंने लगाई थी, शायद डिफेंस से थोड़ी सी गलती हुई थी, लेकिन सुपर टैकल की सिचुएशन में जहां पेवियर पैंथर्स के लिए अनुज भी मौजूद है, उनका साथ निभाने के लिए लोकेश भी है, मुझे लगता नहीं है राधिका कोई गलती करती हुई टीम नजर आएगी। And this is Gopal Singh. Yeah, just I think that these raiders have not been attacking Ayush, because they're just playing on the back line away. Maybe they wanted, because then it would be a do or die raid for Chambal challengers, so that's the reason they're waiting. अब ये नहले पे दहले वाली सिचुएशन है संस्कार मिश्रा के लिए। अपने गुरु ने जो इनको अजाकार दिखाए वो दिखाने पड़ेंगे। मल्टी पॉइंटर रेड लगा दी, 2 पॉइंट निश्चित तौर पे सुनिश्चित करेंगे अपनी टीम के लिए। की परिस्थिति में सिर्फ एक ही दिया गया, सिर्फ एक ही पॉइंट अनुज का क्लेम था, उनको बाहर भेजा गया है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो टच कर लोकेश को भी आए हैं। That was definitely a solo tackle, but then backtracking skills were too good from Sanskar Mishra there. One point, Periyar Panthers, number 88 out. इस मुकाबले में चंबल चैलेंजर्स की तरफ से हिम्मत ने पहली नहीं दूसरी बार गलती की है। गोपाल ने ये अंक निकाला नहीं है, बल्कि हिम्मत ने इंडीड उनको वो अंक दिया है। सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है। क्या डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, क्या गोपाल को बाहर बुलाकर किसी और खिलाड़ी को अंदर भेजना चाह रहे हैं? Yeah, again a super tackle opportunity and Sanskar Mishra, and we have Lokesh Gosalia. I mean, from the left corner he moved to the right corner. I am not sure how confident he would be from there, but then the ankle hold was too good, Ayush. एंकल होल्ड वाज स्पॉट ऑन इंडीड। राधिका, इस खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाया गया था। सुपर टैकल की सिचुएशन में अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाला है मोनू प्रसाद ने। कॉर्नर की पोजीशन पे थे, बॉडी को पूरा बेंड किया, एंकल के ऊपर दावा बोला। हालांकि लोकेश को आइडिया था नहीं कि रेडर वो डुबकी एग्जैक्टली निकाल कहां से रहे थे, लेकिन रिची बॉय ने कहा कि चलिए जनाब, मैं यहां मौजूद हूं, सपोर्ट देके दिखाऊंगा। Maybe I felt, maybe Sanskar Mishra would have attacked Lokesh Gosalia because he is not standing in his prominent position. वो बैंड का खौफ राधिका आप और मैं दोनों ही जानते हैं। वो नीले कलर का बैंड जब आप पहन के खड़े होते हैं, पोजीशन चाहे कोई भी हो, और फिर दूसरी बात ये भी है क्योंकि मोनू सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए हैं, उन्होंने एक भी डिफेंसिव स्किल अभी तक दिखाई नहीं है, तो शायद सोचा होगा कि उसी तरफ अटैक किया जाए। हालांकि इट्स वेरी सब्जेक्टिव। Exactly. And Ajay Maravi is just filling in the shoe for the second raider. Now he needs to get those points because Periyar Panthers, we thought they might get on to an all out, but then they're slowly picking up. रेडिंग डिपार्टमेंट को यदि थोड़े और बेहतर तरीके से संभाल लेती है पेवियर पैंथर्स की टीम, तो शायद चीजें बदल जाएगी। मंजीत कवर खेलते हैं, रेड लगाना इतने अच्छे से आता नहीं है, शायद उसी के चलते सिर्फ वॉक को पार किया।
डू और डाई के ऊपर खेलने की परिस्थिति बनाना चाहती है पेवियर पैंथर्स की टीम। अंदर जाना चाह रहे हैं, बोनस वैसे भी एक्टिवेट नहीं है, बहुत डीप आने देंगे चंबल चैलेंजर्स के डिफेंडर्स। 6 का डिफेंस, 5 का डिफेंस, बैग ऑफ पार्डन पूरी तरीके से नचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मंजीत मित्रा ने सिर्फ समय का इस्तेमाल किया है। एम्प्टी हैंडेड वापस जाएंगे। सरदार बैठे हैं वहां, इंतजार कर रहे हैं अपने रिवाइवल का। Gopi Mailapalli, you know, he is a kind of an all-rounder, but not 100% on either of the things. But then sometimes he comes with a beautiful surprise, Ayush. So he is sometimes there on the mat, sometimes he is as a substitute. That's when he needs to work on. राधिका, मारवाड़ी में एक कहावत है कि जब जब गेहूं पिसता है भून पिसीजता है, और उस गेहूं के साथ भून जो पिसने वाला है, मुझे लगता है चंबल चैलेंजर्स की टीम में गोपी है। कभी डिफेंस, कभी रेडिंग, सब कुछ इनसे कराई जाती है। रिचपाल जहां डू और डाई की सिचुएशन में डैश, रिचपाल बाहर। दुर्गेश, ये वो दुर्गेश नहीं है जो रेड लगा के अपनी टीम के लिए पॉइंट लाते हैं, लेकिन ये वो दुर्गेश है जो डैश करके बदला पूरा करते हैं। कमाल किया है दुर्गेश साहू ने। And Durgesh Sahu has done a brilliant job, but then Ajay Maravi was equally good. You know, the way he came in as a second layer was spot on. डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ है, लेकिन वहां डिफेंस के अंदर अनुज मौजूद थे नहीं। मोनू ने कमाल किया है, इस बार मंजीत से गलती हुई, फ्रंटल ब्लॉक के लिए गए, अजय ने डुबकी लगाई। पिछली बार डिफेंस के अंदर सपोर्ट दिखाया था, यहाँ रेड लगाते हुए रिवाइवल लाएंगे। चंबल चैलेंजर्स नंबर 4 आउट। Oh, he went in with a wrong foot for a kick, but then he took a wrong turn to get the right point. 9 out. A good one that he broke that super tackle. रोहित को सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाया गया। पिछले मुकाबले के अंदर इस खिलाड़ी ने बहुत सारे पॉइंट निकाले थे, लेकिन आज सरदार को खिलाया गया, इनको स्टार्टिंग 7 में जगह नहीं दी गई है। तो क्या वो कॉन्फिडेंस जो इन्होंने पिछले मुकाबले में छोड़ा था उसको कंटिन्यू कर पाएंगे? बैक किक, उसकी हाइट देखिए राधिका, कितनी अच्छी हाइट के ऊपर कनेक्ट किया था। ऑल्दो वो परफेक्ट कनेक्शन बॉडी पे टच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो स्किल सेट बहुत अच्छा। बोनस मिलेगा। Yes, because the Chambal challengers are eyeing on all out, but will that be a second super tackle for Periyar Panthers, or will Sanskar Mishra make it count? I'm sure it's a super tackle. मोनू जिम जाते हैं, उनके बाइसेप से साफ पता चल रहा है ट्राइसेप की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। अभी भी स्ट्रगल जारी, हालांकि संस्कार मिश्रा ने गिव अप नहीं किया। क्या वो अपनी टीम के लिए पॉइंट ला पाते हैं या फिर उनकी रेड टूट जाएगी? विसल बजी, रेड टूटी संस्कार के अद्भुत एफर्ट्स, लेकिन तालियों के साथ स्वागत किया उन 2 पॉइंटों का पेवियर पैंथर्स की टीम ने। मोनू, आपने अपनी ताकत से ना सिर्फ रेडर की दिशा बल्कि खेल की दशा भी बदल दी। पेरियार पैंथर्स, You know, they have substituted Lokesh Gosalia to get in a raider, but then the substituted raider also was too good to hold on to that super tackle, Ayush. वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इन्होंने देखा कि मोनू ने पिछली बार वो डिफेंस अटैक किया था और उसी के चलते उनको पॉइंट मिले, तो यहाँ जब मोनू को सपोर्ट की आवश्यकता है वो सपोर्ट दे के दिखाएंगे। 9 नंबर पर कुछ बातचीत चल रही है। अब जर्सी नंबर 9 तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा चंबल चैलेंजर्स की टीम में। Now Rohit Yadav, they have given away the bonus, thinking, you know, they might just sweep out in the all out, but then that was a super tackle in favor of Periyar Panthers. Now they need not give the bonus as well. bonus plus 2 point Periyar Panthers number 4 and 3 out. सुपर 8 पेवियर पैंथर्स की टीम को इसी की तो आवश्यकता थी। अपने आप को उस ऑल आउट से बाहर रखना चाह रहे थे। अनिकेत, दुर्गेश दोनों को बाहर ले गए। सबसे पहले अनिकेत ने वो जो इनिशिएशन की कोशिश, इनफैक्ट दुर्गेश ने कॉर्नर की पोजीशन से वो अटैक बिल्ड किया था, और अनिकेत तो शायद जज्बातों में बह गए। मिड लाइन के इतना पास जब रेडर है तो रोकना मेरे हिसाब से वो समझदारी का फैसला है नहीं। 5 का डिफेंस है, रेड लगाने के लिए गोपी गया। अगली आवाज राधिका की। You know, they have got multiple opportunity to get those all out points, Ayush. You know, somewhere they are fumbling in the defense, and definitely in the defense especially. ये नए जमाने के अनुज है, ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस नहीं करते, रेड भी लगाते हैं। लेकिन आमतौर के ऊपर वो 3 सेकंड की रेड के लिए तो मैं इनको थोड़ा कम ही देखता हूँ। शायद डू और डाई के ऊपर खिलाना चाह रहे हैं। अजय मारावी रेड पे आए हैं। इस खिलाड़ी ने अपना पहला जो रेड पॉइंट निकाला था वो मल्टी पॉइंटर रेड के तहत था। 2 पॉइंट आए थे, फिर 1 पॉइंट इन्होंने सोलो निकाला था। इन टोटल 3 पॉइंट रेड लगाते हुए इनके पक्ष में है।
डिफेंस क्योंकि पा चुका है, बोनस एक्टिवेट नहीं। अनुज जो पिछली रेड पे आए थे उनके सामने ज्यादा समय तक चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कहर बन पाते हुए मोनू भी नजर आ रहे हैं, और मोनू की एफिशिएंसी देखिए राधिका आपकी, उनके साथ लोकेश खड़े हैं, लेकिन लोकेश इनकी पोजीशन पे। Now it's a do or die raid for Chambal challengers, and Ajay Maravi goes in. If he succeeds, he will not only get a point in do or die, but he'll also revive Sanskar Mishra. Alright, then that was Sardar. Beg your pardon for that mistake. जर्सी नंबर 3 के तौर पे सरदार इनकी पोजीशन पे डू और डाई है। अजय को यहाँ पे पॉइंट निकालना ही पड़ेगा, या तो ओपोनेंट को पॉइंट देकर आइए या अपनी टीम के लिए पॉइंट लेकर आइए। अनुज से गलती हुई, मोनू को भी बाहर जाना पड़ा। मोनू मुझे लगता है कि अनुज से बड़ा खतरा थे। पैंथर्स की टीम की तरफ से दो टॉप डिफेंडर्स, कॉर्नर के खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। You know, in that raid, Ayush, just 3 seconds were left and they could not hold on. Wait. And ankle hold was good, but their corner did not come to support right on time. डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है। डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ भी है। रोहित यादव जो सब्स्टिट्यूट होकर अपनी टीम के लिए आए हैं रेड लगाने के लिए, लोकेश को सब्स्टिट्यूट करके यदि किसी को बुलाया गया है तो यही वो खिलाड़ी है। लेकिन क्या अपनी टीम के लिए पिछली बार जैसे एफर्ट इन्होंने डिफेंस के अंदर वो सुपर टैकल कन्वर्ट करने में निभाए थे, वो डू और डाई में पॉइंट निकालने में निकाल सकते हैं। टो टच आया है, क्लेम लगातार किया जा रहा है, और हेमंत से लगातार गलतियां भी हुई है। क्या इस बार गलती मिलेगी? चंबल चैलेंजर्स नहीं, रोहित बाहर। You want review? Because he did not cross the box line, he was just confident enough that he got that touch, toe touch. He did not it was a cross do or die, the box Radhika. line. Oh, is it? Oh, I'm sorry. It was a do or die situation. रिव्यू के लिए पूछा भी था कि क्या आप वो रिव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन साफ तौर पे नकार दिया कि मैं वो रिव्यू नहीं लेना चाहूंगा। पेविया पैंथर्स के डिफेंस पे सिर्फ 2 खिलाड़ी खड़े हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि खड़े थे, पता ही नहीं चला वहां पर सरदार को कि किस तरीके से उनको वो टच दिखाया गया है। वो जर्सी कब छुई, उसके कपड़े की क्वालिटी के बारे में चंबल चैलेंजर के सबसे लंबे हाथ वाले संस्कार ने क्या बताया, ये रेफरी ने विसल के साथ क्लेम किया है। 1 पॉइंट मिलेगा संस्कार को। यही होता है लंबे हाथों का फायदा। 6 out. Absolutely. All credit should be given to Ajay Maravi, who has got those 2 raid points in a do or die and got Sanskar Mishra's revival. नकुल सैनी इस खिलाड़ी को भी सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाया। पेविया पैंथर्स आमतौर पे वो शुरुआती क्षणों में पहले आप में सब्स्टिट्यूशंस नहीं करती। फ्रंटल बॉक्स कॉम्बिनेशन टैकल, क्या 1-1 मिल सकता है या सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा? रेडर बाहर या ऑल आउट के पूरे पॉइंट? कई सारे सवाल है। 1+2 रेडर आउट, ऑल आउट, चंबल चैलेंजर्स 3 पॉइंट, पेरियार चंबल पैंथर्स चैलेंजर्स all out. लीड पे। Yeah, they have All been in. postponing it for some time, but then they have got this all-out points. The Chambal challenges here. What a lovely block and dash coming in. And Gopi Mailapalli, as we say, he is good at those assists. राधिका मुझे नहीं पता कि वो गवर्नमेंट नौकरी की हायरार्की आपको पता है या नहीं, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि आप प्रमोशन को पहली बार फोरगो कर सकते हैं, दूसरी बार कर सकते हैं, तीसरी बार आपको उस लोकेशन पे जाना ही पड़ता है जहाँ सरकार आपको भेजना चाह रही है। लेकिन यहाँ तो डिमोशन हो गया। पेविया पैंथर्स को ऑल आउट करके बाहर भेजा था, इस बार संस्कार से वो बदला लेंगे। एक अंक का रिवाइवल। पेरियार पैंथर्स संस्कार बाहर। Exactly, he did not reach the mid line, so that was a very good call from the referees. Anuj Saini, yeah, that was a very, very good call. I think it should be 1 each, Ayush, because his legs were not in contact in the lobbies. सारे जूते एक ही जैसे हैं। एक क्षण के लिए लगा था कि अनुज का पांव हवा में उठा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो संस्कार के ही दोनों पैर थे, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। Oh, very much possible, but I really wish we could see that replay once, and maybe Chambal challenges would have gone for a review. राधिका, क्यों मुझे गलत वो ठहराने के ऊपर तुली? आपको रिव्यू नहीं लिया जाए तो ठीक है, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी इंजर्ड है। हमारे फिजियो पार्टनर्स भी मौजूद हैं। रिहान को बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं रिहान के ऊपर रिहान ने इनफैक्ट वो कमजोर एंकल होल्ड की कोशिश की थी रिची बॉय पे। Exactly, Heavy no Panthers anticipation at all. 7 out. Red. Chambal. Lot confusion going on.
मुझे ऐसा लगा था राधिका कि कोई इंजरी कंसर्न हुआ है पेवियर पैंथर्स के कैंप में, नॉट टू श्योर दो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का वो जो एंगल था वो भी शायद हम मिस कर गए। अजय मारावी ये अपने टीम के लिए ज्यादा पॉइंट मिस नहीं करते, इस बार वो दाएं से बाएं चहलकर्मी मोनू के सामने गए हैं, टो टच करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोनस मिलेगा। कितना क्विक रनिंग बोनस था वो। Normally he is one raider who is good at escaping kill, but this time around he goes for the running bonus. So such a variation should be got in. चार का डिफेंस कबड्डी के खेल में सबसे टफ माना जाता है, लेकिन यहाँ 5 के अंदर स्ट्रगल में जा चुके हैं रोहित यादव। सब्स्टिट्यूशन होने के बाद में जिस तरीके का खेल रोहित ने अपनी टीम पेवियर पैंथर्स के लिए दिखाया वो तारीफ काबिल है। 4 पॉइंट, सबसे ज्यादा पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाल लिए। 13 में से 4 रेड पॉइंट इस खिलाड़ी के। समझ नहीं आया स्टार्टिंग 7 में जगह इनकी क्यों नहीं है, क्यों लोकेश को सब्स्टिट्यूट करके अंदर नहीं लाया जा रहा। कई सारे सवाल मेरे जहन में चल रहे हैं राधिका। Absolutely, you know, Lokesh being the prime defender, he's not seen on the mat. So that is definitely a concern for the team as well. And Ajay Maravi, he's been too good today. Nothing to take away from मोनू। 4 पॉइंट उन्होंने डिफेंस करके निकाले हैं, लेकिन हाई फाइव की झड़ी लगाने वाला वो खिलाड़ी लोकेश मैट से बाहर है, तो ये दृश्य थोड़े से टीज करते हुए नजर आएंगे। अनिकेत जो फिलहाल कॉर्नर की पोजीशन पे हैं, उनके सामने रिजपाल जाट ने टो टच करने की कोशिश की। अब दुर्गेश साहू की तरफ गए हैं। साहू साहब अपने आप को संभाल के रखना जानते हैं और वही सबसे बड़ी कला है इस खिलाड़ी की डिफेंस के अंदर। तितर बितर हो रखा है थोड़ा बहुत डिफेंस, ज्यादा चेंज आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन नजर तो इस बार आपको अंक भी नहीं आएगा। 7 in, 9 out. 6 in, 3 out. 9 in, Yeah, as 17 out. you see, Lokesh Gosalia comes Five in. out. 17 out. लोकेश अनुज दोनों ही अंदर आए, Red. लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि क्यों मोनू को बाहर भेजा गया। क्या वो कॉर्नर के अलावा कोई और पोजीशन नहीं खेल सकते थे? क्या मंजीत की जगह वो नहीं ले सकते थे? Yeah, very much possible because you know if he's good at left corner, he could be good at a left cover as well. 3, 5, 17 out. In Yeah, as 9, we talk about 7, substitutions, Ayush, you know, at in a match there would be 5 substitutions, Nine, means 7, 5 16. times substitutions, and in one substitutions you can change n number of players. आपने लिखा और जो दर्शक कबड्डी के खेल से नए जुड़े हैं उनको ये भी बता दें कि कबड्डी के नियम में सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि एक बार आप फुटबॉल की तरह बाहर चले गए तो दोबारा आप अंदर नहीं आ सकते। आपको यदि आपके कोच के पास में वो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन बचे हैं, बकाया है, तो आपको वापस बुलाया जा सकता है। 1.5 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है। अजय अपनी रेड के साथ 16 पॉइंट इन टोटल अभी तक चंबल चैलेंजर्स ने निकाले हैं, जिनमें से 6 का योगदान अजय का रहा है। एक बार मल्टी पॉइंटर रेड भी लगाई है। कॉर्नर पे अब वही 2 खिलाड़ी हैं जिनको देखने के हम आदी, एक तरफ अनुज, दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट कॉर्नर पे लोकेश। Absolutely, he should attack on the left cover, Ayush. But then I think they do not want to take a risk. They just want to have a brainstorming sessions once they finish the first half. डू और डाई और रेड लगाने के लिए रोहित यादव 4 पॉइंट रेड लगाते हुए निकाले हैं। मोनू प्रसाद ने डिफेंस करते हुए 4 पॉइंट निकाले थे, उनको बाहर भेज दिया। इनका सीधा सामना दुर्गेश से होता है और दुर्गेश साहू ने आज के इस मुकाबले में सिर्फ 1 पॉइंट निकाला है, तो गोपी भी थोड़े जज्बात दिखा रहे हैं। अनिकेत उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा एंगल बना जरूर था, लेकिन फिर कॉम्बिनेशन टैकल के चलते चंबल चैलेंजर्स ने जैसे तैसे करके रोहित को रोक लिया। Absolutely, he was just swinging in there at the same plank for about 15 seconds. So the defense got, the rhythm got calculated with the defense. So that's how the combination effort there. तो इसी के साथ पहले हाफ की समाप्ति, 17-13 का स्कोर चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में। रेड करते हुए 2 अंकों का फासला है वो चंबल चैलेंजर्स एंजॉय करती हुई नजर आएगी और उसका कारण हम सभी जानते हैं अजय की वो रेड। संस्कार ने 3 पॉइंट निकाले हैं। टैकल दोनों टीम ने बराबर किए हैं क्योंकि डिफेंसिव पैक यूनिट से दोनों टीम, इनसे ऐसी उम्मीद की जा सकती है ऑल आउट के पॉइंट चंबल चैलेंजर्स को मिलेंगे। काफी समय तक पेवियर पैंथर्स ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा समय तक कब तक अपने आप को रोक पाते, जज्बातों में बह गए। एक्स्ट्रास के पॉइंट दोनों टीम को बराबर मिले, लेकिन जीत किसको मिलेगी ये पता चलेगा ब्रेक के उस पार। बने रहिए हमारे साथ।
नमस्कार, स्वागत आप सभी का। पहले हाफ का खेल खेला जा चुका है। दो पड़ोसी आमने सामने हैं, एक तरफ चंबल चैलेंजर्स तो दूसरी तरफ आपको पेवियर पैंथर्स की टीम नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके का खेल अभी तक हमने देखा है, दोनों टीम बराबरी पे है। हालांकि अंकों के बीच में वो 4 अंकों का फासला है, लेकिन जो स्किल सेट दोनों टीम ने दिखाया उससे साफ पता चलता है कि ये मुकाबला अंत तक बराबरी के ऊपर जा सकता है। अनुज से कुछ गलतियां हुई थी, उसी के चलते उनको सब्स्टिट्यूट करके बाहर भी बिठाया गया था। लोकेश ने कॉर्नर के एंगल को चेंज किया, आमतौर पे आपको लेफ्ट कॉर्नर पे खड़े आते हैं, आज राइट की पोजीशन पे थे। रेची बॉय, रिचपाल जाट, इनको बाहर जरूर भेजा गया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने वापसी करके दिखाई है। कुछ गलतियां कवर के इस खिलाड़ी से हुई थी, जिसकी जगह शायद ये जो खिलाड़ी जर्सी नंबर 5 में आपको मोनू नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सुपर टैकल भी लगाई है, 4 पॉइंट इन टोटल भी क्लेम किए हैं, इनको खिलाया जा सकता था। सपोर्ट बहुत अच्छा रोहित यादव ने दिखाया। हालांकि रेडर है, लेकिन डिफेंस के अंदर भी अपनी टीम के लिए काम किया। और फिर जो इनकी प्राइम भूमिका है वो हम आप ये सभी जानते हैं कि वो निश्चित तौर पे करके दिखाएंगे। अनुज थोड़ा सा वीक फ्लैंक आज खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है? नहीं, शायद कोच बेहतर जानते हैं। और कबड्डी की गहराइयां हमें बताने के लिए कॉम बॉक्स में मेरे साथ राधिका हैं। स्वागत है राधिका। Yeah, thank you, Ayush. Yes, they're going neck and neck, and they are playing a very calculated game here, Ayush. You know, they know when to stay quiet, when to play on a do or die raid. They're playing very calculated, so this will definitely go down to the wire. Radhika, when you used to play Kabaddi, were you also Bonus playing point, those calculative Chambal sort of skills? Back then, Ayush, you know, there was no do or die raid, there was no super tackle opportunity. So if some team had, you know, at least a 2-pointed, they would hang on there with that 2 points. It was not like a big point match then. It was like, you know, 10 points, 20 points was match then. Of course, you know, strategies will always be there. नहीं, वो मैंने कैलकुलेशन आपके गणित को लेके पूछा था सिर्फ। Yeah, sometimes I work out well. Sometimes, especially when I'm with you, somehow I fumble. चलिए, जोक्स अपार्ट, लेकिन वो गणित वो ऐसी ही है, या तो उसमें जीरो या फिर पूरी तरीके से हीरो, वही करती हुई दिखाती है। मुझे याद है, मैं पहली बार गणित के अंदर फेल राधिका लिटरली स्पीकिंग 7th क्लास के अंदर हुआ था। 6th क्लास में आई स्कोर्ड 98 मार्क्स, क्योंकि 7th के अंदर वो XYZ आ गए थे एंड दैट वाज प्रीटी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल। लेकिन यहाँ ये रेट थोड़ी सी हैंडल करना मुश्किल हो रही है अजय के लिए। Yeah, I think now it's a do or die raid strategy, but both the teams are willing to play, Ayush. No, Richpal Jat, he needs to perform much better than what he has done so far in the past 20 minutes. सिर्फ 2 पॉइंट निकाले, कई सारी रेड लगाई है। इस बार गोपी ने एंकल पकड़ी है कवर्स के खिलाड़ियों ने, विशेषकर अंकित और उनके साथी खिलाड़ी ने फ्रंटल ब्लॉक भी दिखाया। बोनस पॉइंट इंश्योर किया था रिचपाल ने। इससे एटलीस्ट ये चीज तो श्योर हो गई कि दोनों टीम के बीच में फासला नहीं मिलेगा। Absolutely. You know, in a do or die, he waited for an opportunity, but then he just went deep in for a bonus, got that, but then he's been knocked out. Sanskar Mishra, he will be the key raider to, you know, turn around the match for Chambal Challengers. 5 के डिफेंस में है, 4 पॉइंट इन टोटल अभी तक इस मुकाबले में संस्कार ने निकाले हैं। सबसे लंबे कटकाठी के हैं, लेकिन फिर भी आज रेड लगाने के ज्यादा मौके अजय को दिए गए हैं। ये शायद कोच की या फिर इनकी टीम की स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अभी तक तो ये स्ट्रैटेजी सही काम आ रही है। पेवियर पैंथर्स, क्योंकि इनके रेडर्स ज्यादा पॉइंट नहीं निकाल रहे, ऑप्शंस तलाश रहे हैं। अनुज सैनी ने पिछले कुछ 5-7 मुकाबलों में रेडिंग करके दिखाई है, लेकिन सक्सेस कितनी मिलती है ये शायद वक्त ही बताएगा। कवर को टच करने की कोशिश, कॉर्नर से गलती हुई है, कॉर्नर से भरपूर गलती। इससे बड़ी गलती क्या मैं कहूंगा गुना कबड्डी के मैट पे हो नहीं सकता। Absolutely, Rehan Sheikh, half-hearted. I know where was the angle for a frontal block, but then soon he realized that, you know, nobody should be there. Yeah, I think Sanskar Mishra is slow today because he was being caught thrice, and this is the 4th time, Ayush. बस आप गिनती करते रहिए। पेवियर पैंथर्स के डिफेंस को जब आप चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, वो मुंह तोड़ आपको जवाब देंगे। कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर मंजीत को चेंज करने के लिए मुझे ऐसा लगा था कि शायद किया जा सकता है, तो मंजीत ने ना सिर्फ संस्कार को बल्कि मुझे भी वो करारा जवाब दिया। पीछे से इनिशिएशन दिखाया था, सामने राहुल बेग पार्डन मौजूद थे, और फिर वो सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस, जैसे कि राधिका बताती है, वो तो पेवियर पैंथर्स के तैयार ही रहते हैं। Yeah, Rohit Yadav, a super sub so far for Periyar Panthers. Not too far in the game, either of the teams. As they are playing on a do or die, I'm sure he'll go back.
वहाँ एक खिलाड़ी एंड लाइन को पार किया है या नहीं। ऑलराइट देन, इनकी पोजीशन को कवर की कॉर्नर की पोजीशन ने बचा लिया था। अजय, इस खिलाड़ी के ऊपर थोड़ा सा दबाव जरूर बनेगा। जैसे ही वो फासला कम होगा, पेवियर पैंथर बराबर आने की करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अजय के सबसे ज्यादा पॉइंट है, इनकी जिम्मेदारी भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। डिफेंस हाउस पैक, बोनस की आवश्यकता है, मौका भी है, लेकिन लोकेश शायद इतनी आसानी से चुकाने नहीं देंगे वो फायदा। Yeah, more on Ajay Maravi need to be on the court because Sanskar Mishra isn't there. So, to delay the match, to play on the do or die is good, but then this was a fabulous tackle. Red out, 1 point, Chambal Challengers. मैंने एक बार एक कहावत सुनी थी कि जब इंसान की पॉकेट फटती है ना, तो सिक्के गिरने से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। पेवियर पैंथर्स के रेडर्स के साथ यही होता है। जैसे ही थोड़ा सा वीक फ्लैंक आता है, उनके डिफेंस से पहले उनके रेडर्स टूट जाते हैं। रिचपाल को हमने टूटते हुए देखा है। Exactly, but Ajay Maravi, he is playing a very, very calculative game. He's playing with his brains, which is good to watch. And turn and tough, that's what he claims, and very confident, Ayush. Number one. Redder. Please come. One touch point. Please go back. TV umpire, Chambal challengers. Challenge is 1 touch point. Our decision, no touch point. Please review. He claimed for a flying hand touch on the right cover. That's a very blurry vision for us, Ayush. Maybe if he is wearing a kneecap as well, maybe the defender might have not felt it, but I'm sure we'll get the right decision soon. बिल्कुल राधिका, आपने सही कहा कि वो थोड़ा सा ब्लर था। मैं वाईकेएस की टीम को बता दूं कि मैं लगातार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाता रहता हूं, प्रयास करता हूं कि वो ब्लरी विजन कम रहे, तो प्लीज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की इनडायरेक्ट मदद मत करिए वो विजन दिखा के। Too many pixels, I think that makes the visual a bit. I think the TV referee will have many angles to see it, so I'm sure we'll get the best of the results possible. उनके पास तो वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, जिससे जब वो चाहे, जहां वो चाहे, जिस एंगल को देखना चाहे, उनको दिखता है। चंबल चैलेंजर्स फिलहाल 20 पे 16 के ऊपर पेवियर पैंथर्स की टीम है। रिव्यू की मांग चंबल चैलेंजर्स ने की है। हालांकि रेफरी का जो फैसला था, अंपायर का जो फैसला था, वो पेवियर पैंथर्स के पक्ष में था, टच नहीं दिया गया था। Thank you, sir. Review unsuccessful, no touch point. Captain, your reviews over, no more reviews. पेवियर पैंथर्स के सामने चंबल चैलेंजर्स ने अपना रिव्यू गंवा दिया। लीड के ऊपर थे, लेकिन फिर भी बचे हुए पौना 15 मिनट के खेल में वो चाहते नहीं थे कि किसी भी तरीके से एक भी अंक कम हो। यहाँ भी राहुल जो थे वो सामने आ गए। राधिका, जिप एंगल से भी पूरा पता नहीं चला। Exactly. This is Rohit Yadav. In a defense of 6, bonus is available, and this lad is good at those bonus points as well. लेकिन यहाँ टू टच करना चाह रहे थे, क्योंकि 6 का डिफेंस है, बोनस भी एक्टिवेट है। दुर्गेश साहू को टच मारने की कोशिश है, क्या अनिकेत को भी शिकार बनाया है? इंतजार करना पड़ेगा ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का। सिर्फ दुर्गेश बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ कैलकुलेशंस, कुछ गणना करते हुए नजर आ सकता है अंपायर। पेवियर पैंथर्स के पास में रिव्यू बचा है, एक की जगह 2 हो सकते हैं। ऑलराइट देन, बोनस +2, सुपर रेड फॉर पेवियर पैंथर्स। फासला अब सिर्फ 1 अंक का रह गया। And if I'm not wrong, this is the second super raid for Rohit. First he gets the bonus, and then a kick executed, escapes from the left cover as well. अजय, डू और डाई में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं। 6 पॉइंट निकाले हैं, 7 के डिफेंस में आए हैं। सीधा सामना अनुज और रोहित की इस जोड़ी से होने वाला है, जो इन और कॉर्नर के ऊपर खड़े हैं। अब अपने फ्लैंक को चेंज किया, लोकेश के सामने आए, बीच में राहुल और मंजीत भी दहाड़ मारने को तैयार है। जज्बातों में बह गए कप्तान साहब। 1 point. कप्तान साहब को ये समझना पड़ेगा, जज्बातों की जगह मैट पे नहीं होती। Yeah, normally, Ajay Maravi is a left raider, but then he confused the defense, playing from the left and the right and the left and the right. That's where the defense got confused, Ayush.
कंफ्यूजन, इसका क्या जवाब है? इसका तो कोई तोड़ ही नहीं ना दुनिया में। वहम और कंफ्यूजन, इन दो की कभी कोई दवा मैंने तो सुनी नहीं है राधिका। यदि आपको कभी पता चले तो प्लीज बताइएगा। यहाँ दुर्गेश भी हल्के से कंफ्यूज थे कि क्या वो मैट पे है या नहीं। अभी तक तो वो पूरी तरीके से मौजूद थे। डैश भी आया था, शायद लॉबी के अंदर रेडर का पांव था। इस बार वो कंफ्यूजन क्लियर है, गोपी बाहर है। I think, Chambal Challengers lost the review as well. So, decision came in favor of Periyar Panthers because I think, he put in his hand on the midline from the outside, Ayush. The upper body was completely out of the lobbies. I'm sure, the leg was still there in the lobby, but then the way the hand came inside the lobby, it was from out of the court. यहाँ पे टर्न किया था। Let us say 1 point, Periyar Panthers. Red. चलिए, वो निर्णय पेरियर पैंथर्स के पक्ष में था, पक्ष में ही रहेगा। लेकिन फासला 1 अंक का चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में था, पक्ष में ही रहेगा। संस्कार मिश्रा एंकल के ऊपर धावा बोला, कॉम्बिनेशन टैकल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गिनते रहिए कितनी लेयर्स थी। पेरियर पैंथर्स को फर्क नहीं पड़ता, 21-21 से मुकाबला बराबरी पे। And today, Sanskar has been caught 6 times, Ayush. He is being completely broken in his confidence. A super tackle opportunity now. अब चंबल चैलेंजर्स की तरफ से संस्कार की जो आपने बात की है, 4 पॉइंट निकाले हैं, 6 गवा दिए हैं। यानी कि आज के इस मुकाबले में तो लायबिलिटी के तौर पे खेल रहे हैं वो चंबल चैलेंजर्स के लिए। Wait. Raider, number 15. Raider. Number 7. थोड़े से Now, बॉल्स Ayush, if एक्सचेंज the हुए थे। raider did not, if the Go on, raider go did on, go not on. touch the defender, if the raider did not have touched the defender, I think he's touched it. But if you look at that, there was no contact between the left corner. He stepped into the lobby. और शायद वो कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर ही उस टच की मांग कर रहे थे, जहां पर अजय, जिन्होंने सबसे ज्यादा रेड पॉइंट निकाले हैं, अगर अजय बाहर हुए तो हो सकता है कि ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया जा सके चंबल चैलेंजर्स की टीम पे, और फिर लीड पे आ जाएगी पेरियर पैंथर्स। I think there was a kick, so it should be a safe raid point for the raider. इवन इफ हमें लगता है कि वो सेफ है और शायद रेफरी या एम्पायर्स की निगाहों से वो चूक जाए, क्योंकि पेरियर पैंथर्स के पास उनका रिव्यू बचा है, तो मुझे लगता है कि निर्णय फिर भी उनके पक्ष में जा सकता है। Raider out, 1 point. Super tackle, 2 point. Chambal Challengers. Raider first. Maybe we'll Raider have first, to. no defender out. Okay. Raider first. Okay. Maybe the kick was not executed. Maybe they should challenge it, Ayush. What do you think? अब मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है, बहुत देर हो गई है, जाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे तो रोहित। शायद वो भी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। हालांकि जब वो आए थे रेड लगा के, मिडलाइन को जैसे ही उन्होंने पार किया था, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो दहाड़ लगा रहे थे। Red, Chambal. लेकिन चलिए, ये स्कोर कार्ड में परिवर्तन है, 23-21 हो चुका है स्कोर कार्ड। Yeah, the kick wasn't there on the right corner. He stepped into the lobby. So without the contact, the lobby would be inactive. So super tackle point for Chambal Challengers. That's a good one. A super tackle means 2 defensive points, but 1 revival. एंड मोर इम्पोर्टेंटली अजय मारावी वो अभी भी मौजूद है, और यही तो चाहिए था चंबल चैलेंजर्स की टीम को, कि वो इंश्योर करें उनके लिए सबसे ज्यादा पॉइंट निकालने वाले खिलाड़ी मैट पे रहें, क्योंकि संस्कार ना ही वो अभी मैट पे नजर आ रहे हैं, और इनफैक्ट जब वो मैट पे थे तब भी अपनी टीम के लिए ज्यादा पॉइंट नहीं ला रहे थे। रिचपाल जाट कहने को अपनी टीम के लिए प्राइमरी रेडर की भूमिका निभाई थी, लेकिन पॉइंट्स इतने ज्यादा इस खिलाड़ी को मिले नहीं अभी तक इस मुकाबले में राधिका। Exactly. I think the substitute was far better, and this was a fabulous kick going deep in. The distance was 4 Number 7 out. रेहान बाहर जाते नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि यही कहानी इसी हो चुकी है। बैक किक परफेक्ट एग्जीक्यूशन, इस बार वो टच सही आया था, निशाने के ऊपर आया था, पेरियर पैंथर्स के लिए पॉइंट भी लाया था। और पेरियर पैंथर्स की कहानी यही है राधिका, वो अपने किसी खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट में लाते हैं, सब्स्टिट्यूट में आके वो अच्छा परफॉर्म करता है, अगले दिन अपनी जगह स्टार्टिंग 7 में निकालता है, जैसे ही 1-2 दिन बाद परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप होती है, फिर सब्स्टिट्यूट की जगह पाता है। Exactly, consistency is the key in Kabaddi.
If you perform, you will be there. And just playing in the practice session does not help. First do or die raid will come for Chambal Challengers, Ayush. So that's the reason they are playing on a quick raid for Periyar Panthers. इनविटेशन देके आए थे लोकेश, टीम के कप्तान है, कहा कि चलिए अपने सबसे बेस्ट रेडर को डू और डाई में उतार दीजिए। अजय को उतारा है और कोई चारा भी नहीं था चंबल चैलेंजर्स के पास। सीधा सीधा सामना अनुज से, अनुज ने खुद को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है। उनके साथ में रोहित है, दोनों ने चेन को तोड़ रखा है कवर की तरफ, कवर से लोकेश की तरफ। एक बार फिर लोकेश की तरफ वो टर्न दिखाया था, फिर कवर की पोजीशन पे गए। डू और डाई है, आखिरी के 5-7 सेकंड का खेल बचा है, स्ट्रगल में जाना ही होगा। बोनस फिर भी एक्टिवेट है, इस बार सीधे चाइना की दीवार से भी शायद बड़ी और मजबूत दीवार साबित हुए पेरियर पैंथर्स के लिए उनके कप्तान लोकेश। फ्रंटल ब्लॉक, अजय बाहर। Absolutely, they have played it well, Ayush. You know, they had played with patience, and the left cover, you know, Monu took over, as we spoke about. You know, he could take over that position he took. That's the reason, you know, that was a good combination. Anuj, signing. ये सुनने से पहले मेरे कान और तेज क्यों नहीं हो गए? मैंने सिर्फ ये कहा था कि मोनू कवर की पोजीशन पे खेल सकते हैं या नहीं। मैं खुद डाउट में था, पेरियर पैंथर्स के कोच ने डाउट क्लियर किया। चंबल चैलेंज, प्लीज कम। 44 in, 4 out. Brilliant kick that was. And he should have, you know, got in touch with the corner as well because he was too close, Ayush. क्या ऑल आउट आ रहा है? क्या चंबल चैलेंजर्स के लिए ऑल आउट आ रहा है? यदि यहाँ से ये ऑल आउट आ गया तो फिर स्ट्रेटेजिक टाइम के चलते मोमेंटम फिर रुक जाएगा। इस बार फिर फ्रंटल ब्लॉक आया है और इस बार लोकेश नहीं, उनका सबसे अच्छा दोस्त अनुज लाया है। पेरियार पैंथर्स, चंबल चैलेंजर्स ऑल आउट, ऑल इन। What a comeback for Periyar Panthers here. All in. They were falling short of 5 to 6 points, but then they recovered it and also now leading. समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। चलिए सुनते हैं कोचेस क्या कह रहे हैं। सुने, ओए अनुज, लोकेश, इस बार तक 2 ओवर खेला। हिसाब से, आराम से, बेटा कैच नहीं खानी अब। अब 1 नंबर में मत घुस ज्यादा, 2 नंबर पे खेला, थोड़ा 2 नंबर पे थोड़ा सा आगे खेल। उसका मेरे कवर आवेगा वो एडवांस है, उसका ध्यान रखना। और सिंगल आप तो काट देने, ऐसे भी काट सकता है, इतना ही तो है। आराम से, फ्री माइंड, टेंशन नहीं, नो टेंशन, ठीक है? ओए युवा कबड्डी सीरीज की ऐप को डाउनलोड कीजिए। कहीं मेरे को केस ना हमारे टच मत करना, पॉइंट मत देना बस, ठीक है? आराम से बोल के। अब मोनू को कहा गया है राधिका की टच मत खाना। क्या मोनू रेड लगाने के लिए जाने वाले हैं? स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में हालांकि 5 सेकंड का समय बचा है, लेकिन 5000 का इनाम आपका इंतजार कर रहा है। युवा कबड्डी सीरीज की ऐप को डाउनलोड कीजिए, वो क्विज खेलिए। हो सकता है कि वो इनाम आपके नाम जाए, हो सकता है कि मर्चेंडाइज भी आप जीत जाएं। 1 अंक का फासला था जो अब ग्राफिक्स चेंज होने के बाद पता चला है कि 3 अंकों का है। पेरियर पैंथर्स के पक्ष में है। रोहित यादव की रेड 8 पॉइंट पे है। सब्स्टिट्यूट होकर ये खिलाड़ी आया था, सुपर 10 के करीब जा रहा है। Very, very confident young lad. This is Rohit Yadav, and they still have the review left. So, number three. Please come. Please go back. TV umpire, Periyar Panther challenges 1 point. Our decision, no touch point. Please review. yeah, Rohit Yadav. Looks like there is a very, very close touch, Ayush. Because look at the smartness of the raider. He stretched almost fell flat on the mat to reach the left cover. अब अगर वो टच है तो फुट के ऊपर है और हो सकता है कि क्योंकि वो शूज की वजह से फील ना हुआ हो, टच एंड गो वाली सिचुएशन है। ये सिर्फ या तो रोहित जानते हैं या फिर हमारे टीवी अंपायर जानते हैं। हम तो सिर्फ निर्णय का इंतजार कर सकते हैं राधिका। Exactly. I think looking at the replay, even the referees have a smile because that was a good way of, we've seen flying hand touches, but this was like flat hand touch. You successful. Just lying. 1 point, Periyar Panthers. Captain, you are written. This is what confidence is all about. The young guy Rohit Yadav just was turning from left to right, extended up his right hand, got a hand touch on the toe,
and then claim for that review was successful. लेकिन संस्कार ये सबसे बड़ा मुश्किलात का सबब रहे हैं। पिछले दो मुकाबलों में सिर्फ 7 पॉइंट निकाले हैं और ये सिर्फ इनके इंडिविजुअल लेवल पे नहीं राधिका बल्कि चंबल चैलेंजर्स के लिए भी खतरे की घंटी है। इस बार अनुज को टंग करके बजा कर गए। After such long time, Sanskar Mishra could get a point. Nice turnaround. It was way too advanced for the corner to come in, but that's a tall raider. And I'm sure this guy would get a super 10, the form he is carrying today. और मिलना भी चाहिए। बैक किक के एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा आज इस खिलाड़ी से देखे। दुर्गेश साहू ने कहा कब, कहां, कैसे, किसे लगा, मुझे तो अभी तक वो किक एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। तो फिर एंड के अंदर परिवर्तन कर वापस दुर्गेश साहू की तरफ भी आए हैं। कवर की पोजीशन के ऊपर वो टो टच करने की कोशिश है। दुर्गेश पे फिर रनिंग एंड टच मारा, क्या सफलता मिली या नहीं? मिसल बजी है, 1 पॉइंट भी मिला है और शायद दुर्गेश बाहर। And there's a brilliant super 10, and look at the variation he's getting on the mat, Ayush. You know, different skills every single time he raids. He has those hand touches, he has those kicks, he has those toe touches, and turn and attacks. He has lovely escapes as well. He has got those super raids. मोनू एक बार फिर वो ताकत दिखाई है। मिड लाइन के टच पे नहीं होने दिया संस्कार का हाथ। पूरी टीम ने कॉम्बिनेशन में ओपोनेंट कैंप के सबसे लंबे कद काठी के खिलाड़ी की रेड को तोड़ दिया। He was so slow, and also looks like, you know, he's completely drained his energy without playing much as well. The ankle hold was too strong, but then the covers came in very quick, and the dangling hand was being taken care by the captain. Great. राधिका, लोकेश का ये बहुत अच्छा मूव है। उन्होंने अपनी कॉर्नर की पोजीशन को चेंज कर दिया क्योंकि वो जानते हैं कि शायद उनका स्किल सेट मोनू से बेहतर हो सकता है, लेकिन मोनू की वो पकड़ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो ताकत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और शायद चंबल चैलेंजर्स के लंबे कदकाठी के रेडर्स के सामने उस ताकत की आवश्यकता आज थोड़ी ज्यादा। Now 5-point edge for Periyar Panthers and less than 4-minute game. If the Raiders of Chambal Challengers do not pick, that would be a difficult task. And Ajay Maravi, you know, he has done quite well in the first half. Ayush, we have seen first half 20 minutes, he's got 6. And in the second half 17 minutes, he's just got 1 raid point, Ayush. बिल्कुल, वो पॉइंट्स जो है वो हमने देखे हैं, 7 आज निकाले, बोनस में इजाफा करेंगे। इन टोटल अभी तक इस एडिशन में 58 रेड पॉइंट निकाले हैं। लेकिन राधिका, हमारी स्टेट एंजल, जिसे मैं स्टेंजल कहता हूं, उन्होंने एक स्टैट निकाल के दिया, वो ये है कि अभी तक 58 पॉइंट निकाले अजय ने। क्या उनको और मौके दिए जा सकते हैं? फिलहाल पेरियर पैंथर्स ने मांग की है रिव्यू की। पेरियर पैंथर चैलेंजेस, नो बोनस पॉइंट, आवर डिसीजन बोनस, प्लीज रिव्यू। They have been lucky with the bonus this year, but then let's see. The angle looks good where, you know, leading feet was over the bonus line. The rear foot is still in the air, but then did the landing happen on the bonus line is what it should be the question. Review unsuccessful, bonus point, Chambal Challengers. Captain, your reviews or no more reviews? अब क्योंकि पेरियर पैंथर्स के पास में वो रिव्यू बचा था, उन्होंने सोचा कि 3 मिनट बाद इस रिव्यू का करेंगे क्या, वो वैसे भी कोलैप्स हो जाएगा। रिव्यू की मांग की, लेकिन टच एंड गो वाले रिव्यू में बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस मिली है। इस रेडर को क्या और ज्यादा मौके मिले जा सकते हैं? राधिका, 58 पॉइंट इन टोटल निकाले हैं। आज के मुकाबले में जहाँ संस्कार परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वहाँ इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। कैसे देखते हैं आप इनके योगदान को चंबल चैलेंजर्स के इस कैंप में? Absolutely, no. If you have Durgesh also and also Sanskar Mishra, you're still falling short of the third raider who can be a full-time raider. So Ajay Maravi will definitely have that space available because rotating of the raiders when you have those injuries also, and he has different variation in his skills. He plays very calculatively, so I'm sure he should find his space. सुपर रेड इस मुकाबले में अब तक 2 लगी है जो पेरियर पैंथर्स की टीम ने लगाई है। चंबल चैलेंजर्स डू और डाई पे इनवाइट करना चाह रही है पेरियर पैंथर्स को। ये लीजिए, डू और डाई आ चुकी है, रिचपाल जाट आए हैं। अब इनके लिए तो मैं वो कहना बिल्कुल नहीं समझूंगा उचित जो मैं आमतौर पे डू और डाई के लिए कहता हुआ नजर आता हूं, लेकिन बचे हुए 2.25 मिनट क्रूशियल है इस मुकाबले से। ये हम आप सभी जानते हैं। चंबल चैलेंजर्स अपनी वापसी को ढूंढ रहा होगा। 5 के डिफेंस में बोनस एक्टिवेट नहीं है। गोपी से क्या वो गलती हुई है? क्या वो ज्यादा एडवांस खड़े थे? क्या वो बोनस लाइन वॉक लाइन के भी पार खड़े थे? 1 point, Chambal Challengers.
None of them have the review here. It's a do or die in a defense of 5. There was a lot of confusion in the footwork of the defense, Ayush, of Chambal Challengers. They're getting confused, but then though he went for a diving, touch, but then it's not executed. 3-point edge for Periyar Panthers. Ayush, what do you think? अब यहाँ से ये चीज तो तय है राधिका की जो भी टीम विजय हो वो 7 अंकों से बड़े फासले से उन्हीं थोड़ी सी मुश्किल नजर आएगी, क्योंकि दोनों ही टीम गेम को थोड़ा स्लो करने की कोशिश करेगी। कवर के ऊपर लोकेश, हमने और आपने दृश्य कितनी बार देखे हैं। कॉर्नर अनुज संभाल रहे हैं, दूसरे कॉर्नर के ऊपर मोनू है। यहाँ थोड़े सा डिफेंस दिल मिलाया जरूर था, लेकिन अगली रेड पे अनुज बॉक्स को पार किया। समय का इस्तेमाल करेंगे, गणना करिए कितने सेकंड बचे हैं। I think it was a raider error from Chambal Challengers, Ayush. Ajay Maravi, they would not get many raiding opportunities, and the raiders from Periyar Panthers would not even go deep in unless, they just crossed the box line. You would have gone at least for a bonus. 1 point, Periyar Panthers. Number 8 out. You got a running hand touch or what? Toe touch. Chambal Challengers. Straight away. गोपी को टो टच करके बाहर किया। अनुज के अंदर भी वो स्किल से धीरे धीरे इवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी टीम के रेडर शायद परफॉर्म नहीं कर रहे। पक्का 4 पॉइंट रिस्क ले, रिस्क मतलब पहले बोनस ले और फटाक से मारने का ट्राई कर। 4 पॉइंट पीछे है। रेड में भी तुम लोग को भी अटैक करना पड़ेगा, डिफेंस में भी अटैक करना पड़ेगा। बोनस नहीं जाना, रिच पाल ले। ओए रिच पाल, अगली रेड रिच पाल। Periyar Panthers will run away with the victory here because you hardly get 2 raids here. So I'm sure that there's no coming back unless Periyar Panthers does an error in this attack. Let us say 1 point, Chambal Challengers. Number 7 out. ये अनुज के हाथों में जो वो तिलिस्मी जादू था वो कहाँ गायब हो चुका है। पिछले कुछ मैचेस से हमने देखा है वो एंकल होल्ड करने के लिए जाते हैं और वो पहले ही जर्क से रेडर को छोड़ देते हैं। अजय ने अपनी टीम के लिए वो बोनस तो नहीं, लेकिन वो 1 पॉइंट लिया है। इससे ये इंश्योर हो गया कि ये मुकाबला जब समाप्त होगा, ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आएगी, तो चंबल चैलेंजर्स अपने लिए पॉइंट टेबल के अंदर 1 पॉइंट जरूर क्लेम करेगा। लेकिन क्या अपना वो सुपर 10 जो क्लेम पेरियर पैंथर्स की तरफ से करते हुए नजर आए हैं रोहित, उसके अंदर और इजाफा हो सकता है या नहीं? सिर्फ बॉक्स को पार करके, समय का इस्तेमाल करके एम्प्टी हैंडेड शायद अपने कैंप में वापस आएंगे या अपनी टीम के लिए कोई और टच लाएंगे। मुकाबला तो समाप्त है, ऑफिशियल समय पूरा हो चुका है। पेरियर पैंथर्स अपने लिए जीत लाया है। चंबल चैलेंजर्स को इस चैलेंजर राउंड में पहली हार का स्वाद चखाया है। Absolutely, Rohit Yadav was a super sub who turned around the game for Periyar Panthers. We have seen a few errors in the initial stages in the defense from both the teams, but then Periyar Panthers, they picked up right on time in the defense as well. And for Chambal Challengers, today Sanskar Mishra was that, raider who just lost his confidence completely. सीखना पड़ेगा संस्कार को, क्योंकि 2 ऐसे खिलाड़ी आपकी टीम के अंदर मौजूद है जो कभी ना कभी इस एडिशन के अंदर टॉप 3 रेडर्स की लिस्ट में शुमार रहे हैं। अब क्योंकि दुर्गेश पूरी तरीके से फिट नहीं है तो संस्कार को वो रोल निभाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अजय को जब आज अपॉर्चुनिटी मिली, जब उनको कहा गया स्टेप इन करने के लिए, उन्होंने करके दिखाया। सेकंड हाफ की कहानी स्ट्रेट अवे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगी। डिफेंस पेरियर पैंथर्स का सदावा था, ना सिर्फ डिफेंस में बल्कि रेड में भी आज ज्यादा पॉइंट पेरियर पैंथर्स की टीम को मिले हैं। कुछ टैकल अच्छे करके चंबल चैलेंजर्स की टीम ने भी दिखाए थे, लेकिन वो गणना के अंदर यदि थोड़ी सी भी गलती हुई है तो शायद चंबल चैलेंजर्स से हुई है। कॉम्बिनेशंस में अगर कभी भी गलती हुई है तो वो चंबल चैलेंजर्स से हुई है। ना ही कॉर्नर ना ही कवर भी आज उनका थोड़ा सा एडवांस खेल रहा था। कॉर्नर ने भी डैश करने के वो उड़ते तीर लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये खिलाड़ी ये सिर्फ उड़ा नहीं है, अपनी टीम के लिए उस मुकाम पे जाकर पहुंचाए जहां से जीत शायद उसके पक्ष में जाए। रोहित जिस तरीके से अपनी टीम के लिए पॉइंट्स ला रहे थे, काबिल तारीफ है। डिफेंस तो लगातार दहाड़ता ही है इस टीम का पेरियर पैंथर्स, लेकिन रोहित ने जब जहां जिस स्किल सेट के साथ मौका मिला अपने आप को प्रूव किया है। राधिका Absolutely, he just played with the brains today. I think maybe they would have had Durgesh Kumar in the substitutions at least, Ayush, because when this is a close contest, maybe a substitution of Durgesh would have worked for them. You never know then, अगले मुकाबले में क्या पता वो इतने फिट हो कि मुकाबले में खेल पाए, प्रैक्टिकली वो स्टार्टिंग 7 में आ पाए। लेकिन आज क्या हुआ वो कहानी सीधे आप और हम दोनों देखते हैं। चंबल चैलेंजर्स ये मुकाबला 3 अंकों के छोटे से मार्जिन से, लेकिन फिर भी गंवा जरूर चुकी है। पेरियर पैंथर्स की जीत की गाड़ी अभी भी उसी रथ पे, अभी भी उसी पटरी पे चलती हुई नजर आएगी। 3 अंकों का फासला ना सिर्फ टोटल विक्ट्री में था बल्कि 1.5 पॉइंट के अंदर भी वही फासला था।
टैकल के अंदर 3 अंकों का पास था पेविया पैंथर्स ने हासिल किया है, लेकिन एक्स्ट्रास के अंदर वो 3 पॉइंट चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में गए, उसी के चलते शायद वो स्कोर डिफरेंस आपको नजर आएगा। सुपर रेड 2 लगी थी, पेविया पैंथर्स ने लगाई थी। सुपर टैकल 2 बार क्रिएट पेविया पैंथर्स ने की थी, लेकिन चंबल चैलेंजर्स ने एक बार लुत्फ जरूर उठाया। रोहित यादव सब्स्टिट्यूट होकर ये खिलाड़ी आया, लेकिन फिर भी बेस्ट रेडर का नाम अपने शुमार करते हुए नजर आएंगे। टोटल रेड्स 12 इनिशिएट की थी। युवा है, चेहरे के ऊपर मासूमियत है, लेकिन पॉइंट्स निकालने में कमी नहीं। 10 रेड पॉइंट निकाल के सुपर 10 कंप्लीट किया। 2 जो सुपर रेड लगी थी इस टीम की तरफ से, वो दोनों में ही इस खिलाड़ी का इन्वॉल्वमेंट था। स्ट्राइक रेट 80 से ऊपर का अद्भुत ये खिलाड़ी। Absolutely. I'm sure he should find the place in the starting 7. And Monu Prasad, what a defender he turned out to be in our defense strong unit. Total attacks is 4 and tackle points were 5. One of the super tackles he executed were 2 of them. And look at the tackle strike rate, 125. What more do we ask for? 125 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए खिलाड़ी नजर आया। पेविया पैंथर्स राइट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। 2 मुकाबले खेले, दोनों में इनको जीत मिली। हालांकि पल्ली टस्कर्स को एक्शन में अभी भी आना है, उनके पास में चांसेस थोड़े ज्यादा है। यदि वो स्कोर डिफरेंस अच्छा मेंटेन कर ले तो ऊपर जा सकते हैं। चंबल चैलेंजर्स तीसरे पायदान के ऊपर बनी रहेगी। दूसरा मुकाबला खेला था और पहली हार चैलेंजर राउंड में उनके पक्ष में गई है। अरावली एरोज की टीम अभी तक उन्होंने खाता खोला नहीं है। नीलगिरी नाइट्स 2 मैचेस खेले, दोनों इस टीम को गंवाने पड़े। आज के दिन का अगला मुकाबला मैच नंबर 99 पल्ली टस्कर्स के सामने अरावली एरोज आएगी। मुकाबला 8 बजे जरूर शुरू होगा, लेकिन अभी भी आप लोग कहीं जाइएगा मत, क्योंकि समय कुछ समय में होने वाला है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का। स्टे कनेक्टेड ओनली ऑन फैनको। सो पेरियार पैंथर्स के लिए एक और मुकाबला बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ा है और हराया है उन्होंने किसे इस बार चंबल चैलेंजर्स को। तो आइए आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ मैच नंबर 98 ऑफ युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन